गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज ये मैराथन क्लास रे आमे मिडिएवल हिस्ट्री को कंप्लीटली कवर करिबा। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मुझे आउ किछि 30 सेकेंड टू 1 मिनिट टाइम दोची जो माने एटी लाइव अछन मते टिके जणै दियंतु कि ऑडियो एंड वीडियो सब क्लियर अछि कि नहीं, बफरिंग होछि कि नहीं, तापर हमें क्लास टी स्टार्ट करिबा। ओके, कहउछंती क्लियर अछि बोली। टॉपिक्स एंशिएंट हमें डिस्कस करथिले, हर्ष को पाखरु हमें डिस्कस करबा हर्ष एंड द राइज ऑफ कनौज। देन चालुक्यस एंड पल्लवस हमर आसी जिवे। देन चोलस एंड पांड्यास। देन एडवेंट ऑफ अरब्स एंड टर्क्स। तापरे हमें डिस्कस करिबा बहमनी एंड विजयनगर किंगडम्स। कल्चरल सिंक्रेटिज्म रे भक्ति मूवमेंट ऑफ इंडिया हमें टिके को भलसे पढ़िबा, इंपोर्टेंट टॉपिक टा। देन मुगल एम्पायर एंड लास्टली हमर मराठास आसीबे। ठीक अछि, तो 8टी टॉपिक हमें कवर करिबा मिडिएवल इंडिया रे। कॉपी पेन आई मीन नोट पेन आईपैड जो थरे भी आपण नोट्स नौथिबे तो सेटा टिके नै कि बसिबे। एंड जहाँ भी आपन को लागिबो कि एक्स्ट्रा पॉइंट मु किछि कहली जोटा कि नोट्स रे नाही ताकू सेठी ए पीडीएफ तो आपन को मिलि जिवो, किंतु नोट्स रे ताकू रनिंग नोट्स बनै देबे। ठीक अछि, स्टार्ट करिवा। हर्ष टाइम पीरियड केते 606 रु 647 सीई। गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन परे जोटा कि 6th सेंचुरी रे हेइतिला, पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया डिसअपियर्ड। नॉर्थ इंडिया रे आ पॉलिटिकल यूनिटी किछि रहिलानी। एंड पॉलिटिकल यूनिटी जेहेतु रहिलानी, एम्पायर ब्रोक इनटू सेवरल स्मॉल किंगडम एंड ताकू अलगा अलगा डायनेस्टीज बा रूलर्स माने रूल कले। एज अ रिजल्ट कोन हैला, जेहेतु गोटे यूनिफाइड किंगडम आ रहिलानी ताले रीजनल आइडेंटिटीज स्ट्रांग हे गला एंड मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स एमर्ज्ड। सम इंपोर्टेंट किंगडम्स जोडा का से पीरियड रे थिला, जेमति कि मैत्रकस ऑफ भालावी इन गुजरात, मौखरीज ऑफ कनौज, वाकतकस इन द डेक्कन एंड द पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर। एई सब किंगडम्स मानक भितरु पुष्यभूति डायनेस्टी जे थिला से इट ग्रेजुअली रोज टू प्रोमिनेंस एंड इवेंचुअली से गोटे लार्ज एम्पायर एस्टैब्लिश कला अंडर हर्षवर्धन, कॉमनली नोन एज हर्ष। हर्ष एटी मु कहली 606 सीई रु नै 647 सीई जाके से रूल करिथिले, जे कि लास्ट ग्रेट रूलर थिले टू यूनाइट अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया बिफोर द राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत। सोर्सेस कोन फॉर द स्टडी ऑफ हर्ष? लिटरेरी सोर्सेस रे बानस हर्षचरित, देन हुएन सांग जो सीयू की एटा भी गोटे सोर्स। देन एपिग्राफिकल सोर्स रही जेमती मधुबन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हे गला, बंसखेरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, सोनपत, नालंदा, ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ए सब होची सोर्सेस जेउठु हमें जानि थाउ तांको विषय रे। फाउंडर पुष्यभूति, पुष्यभूति डायनेस्टी रो फाउंडर थिले पुष्यभूति, जे कि थानेश्वर रो नै कि रूल करूथिले मॉडर्न हरियाणा जोटा हमें कहि थाउ। He initially served under the Gupta rulers and later established an independent kingdom after the decline of the Gupta power. प्रभाकर वर्धन डायनेस्टी टा पावरफुल हैला अंडर द रियाइन ऑफ प्रभाकर वर्धन। सी फाइट करथिले अगेंस्ट हुन्स एंड गुर्जरस। देन तंग अथॉरिटी को से स्प्रेड करथिले टू रीजन सच एज मालवा एंड गुजरात। तंगर पॉलिटिकल अलायंस को स्ट्रेंथन करबा को सेतबेले कोन मैट्रिमोनी अलायंसेस चलुथिला। सो ही मैरिड हिज डॉटर राज्यश्री टू हुम ग्रह वर्मन, जे थिले मौखरी रूलर ऑफ कनौज।
प्रभाकर वर्धन ड्रीम्ड ऑफ बिल्डिंग अ लार्ज एम्पायर किंतु तांकर ड्रीम टा इवेंचुअली फुलफिल कले तांकर यंगर सन हर्ष राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धनकर डेथ परे तांकर जो बड़ पुओ थिले राज्यवर्धन से किंग हेले एंड हाउएवर तांकर जो रियाइन थिला माने तांकर किंगशिप टाइम रे इट लास्टेड ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड तांको किए शशांक जी थिले रूलर ऑफ द गॉड बा बेंगल से ताको मर्डर करथिले तांकर डेथ गोटे पॉलिटिकल क्राइसिस आनला देन हर्ष ही बिकेम द किंग एक्सेशन ऑफ हर्ष से थानेश्वर किंग हेले इन 606 सीई एट द टाइम ऑफ हिज एक्सेशन नॉर्थ इंडिया आमे देखिले कि डिवाइड थिला बहुत छोटो छोटो किंगडम्स रे एंड हर्ष से रियलाइज कले कि पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन कोन करछि रीजन टाको वीक करि दोछि सो ही बिगैन ए पॉलिसी ऑफ कन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन He aimed to bring various kingdoms under a single political authority and restore stability in northern India. पायल कहउछन्ती बफरिंग होउची की हर्ष कौन हेले कनौज रो किंग हेले कनौज ओरिजिनली मौखरी डायनेस्टी द्वारा रूल होउतिला ग्रहवर्मन कर डेथ परे पॉलिटिकल टर्मोइल से जगह रे आसिला एंड नोबल्स जो थिले कनौज रो से माने हर्ष को इनवाइट कले टू ऑक्युपाई द थ्रोन हर्ष कौन कले इनविटेशन एक्सेप्ट कले एंड यूनाइटेड द किंग ऑफ थानेश्वर एंड कनौज अंडर हिज रूल बिकॉज कनौज टा फर्टाइल गंगा यमुना प्लेन रे लोकेटेड थिला सेटा स्ट्रेटेजिकली सेफर थिला थानेश्वर थारु तो हर्ष कौन कले कैपिटल को सेठी की शिफ्ट कर देले एंड ए पॉइंट ऑनवर्ड्स कनौज बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया रेस्क्यू ऑफ राज्यश्री हर्षंकर फर्स्ट टास्क थिला कि केमिति से तांकर सिस्टर राज्यश्री को रेस्क्यू करिवे तांकर हस्बैंड ग्रहवर्मन कर डेथ परे राज्यश्री शी वाज पर्सिक्यूटेड बाय देवगुप्ता ऑफ मालवा शी एस्केप्ड टू विंध्या फॉरेस्ट एंड डिसाइड दिस इज नॉट इंपोर्टेंट खाली एटा मने रखिबे कि से तांकर सिस्टर को रेस्क्यू करिथिले मिलिटरी कैंपेन्स ऑफ हर्ष वेरी इंपोर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विथ शशांक हर्ष शशांक जो थिले रूलर ऑफ गॉड रिस्पांसिबल फॉर हिज ब्रदर्स डेथ से तांको कोन कले डिफीट कले देन हर्ष कोन कले गोटे अलायंस फॉर्म कले भास्कर वर्मन का सहित द रूलर ऑफ कामरूप मॉडर्न आसाम ओके देन रिलेशंस विथ वालाभी देन से हर्ष कोन करतिले ही इवेंचुअली गेन कंट्रोल ओवर बेंगल मगध ओद्रा कोंगोडा आफ्टर शशांकस डेथ वालाभी सहित रिलेशन इनिशियली हर्ष कोन वालाभी सहित तांगर कॉन्फ्लिक्ट थिला किंतु कंटिन्यू करलेनी से वारफेयर को गोटे फ्रेंडली रिलेशन से एस्टैब्लिश करथिले थ्रू अ मैरिज अलायंस जोथरे की ध्रुव भट्ट ऑफ वालाभी मैरिड हर्ष's डॉटर एंड वालाभी बिकेम एले ऑफ हर्ष कॉन्फ्लिक्ट विथ पुलेक्सन सेकेंड हर्ष तांगर एम्पायर को आमे समस्त जानले कि एक्सटेंड करिया को ट्राई करूथिले टुवर्ड्स डेक्कन रीजन हाउएवर डेक्कन टा गोटे पावरफुल चालुक्य किंग पुलेक्सन सेकेंड को अंडर रे रूल होतिला गोटे मेजर बैटल हेला आंको भितरे ए दुईटी रूलर को भितरे नर्मदा रिवर रो बैंक रे एंड हर्ष से टाइम रे कोन हेले डिफीट हे गले एंड इज सदर्न एक्सपेंशन कोन हेला एंड हे गला किंतु तांकर विक्ट्री परे पुलेक्सन से कोन कले अडॉप्ट कले द टाइटल ऑफ परमेश्वर आईहोल इनस्क्रिप्शन रे आरो डिटेल्स अछि एक्सटेंट ऑफ हर्ष's एम्पायर देखिबा 41 इयर्स से हर्ष रूल करिथिले एंड एटा टिके ओवरलुक कर देबे एक्सटेंडेड लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया जेमति कि पंजाब कनौज बिहार बेंगल ओडिशा आसाम नेपाल कश्मीर ए सब से रूल करूथिले एंड हर्षंकर जतबेले डेथ हे गला 647 सीई रे एम्पायर टा पुनी थरे स्मॉलर किंगडम्स रे रैपिडली ब्रेक डाउन हे गला हर्ष's रिलेशन विथ चाइना हर्ष गोटे डिप्लोमेटिक रिलेशन रखिथिले चाइना रे चाइनीज एम्परर से टाइम रे जो ताई चुंग थिले से डिप्लोमेटिक मिशन सेंड करथिले हर्षंकर कोर्ट को 643 सीई रे एंड अगेन आउथरे सेंड कले 647 सीई रे तो मने रखिबा डिप्लोमेटिक रिलेशंस थिला ठीक अछि आ चाइनीज पिलग्रिम जो हुएनसांग थिले सीए भी बहुत ही रेस्पेक्ट रो सहित ताको ट्रीट करा जाउतला हर्षंकर कोर्ट रे एडमिनिस्ट्रेशन अंडर हर्षंकर एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड नथिला इंस्टेड एटा गोटे इटा बेस थिला ऑन सिस्टम ऑफ फ्यूडेटरीज एंड सबऑर्डिनेट रूलर्स जे कि तांकर अथॉरिटी को एक्सेप्ट करिथिले व्हाइल रिटेनिंग कंट्रोल ओवर देयर ओन टेरिटरीज तो
कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड नथिला दो जो फ्यूडेटरी बा सबऑर्डिनेट रूलर थिले तांकर अथॉरिटी को एक्सेप्ट करथिले किंतु से माने निजे निजे भी तांकर निज निज टेरिटरी ऊपर तांकर कंट्रोल थिला दिस सिस्टम हेल्प्ड हर्ष गवर्न अ लार्ज एम्पायर विदाउट मेंटेनिंग मैसिव ब्यूरोक्रेसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तांकर थिले जे कि एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेन पॉलिसी मिलिटरी अफेयर सिलेक्शन ऑफ रूलर्स पई की भी से माने कोन करथले एडवाइस दोतले रेवेन्यू सिस्टम रे ए सब मने रखिबो ए सब जो टर्म देछि भाग कोन हिरण्य कोन बळी कोन भाग होछि लैंड रेवेन्यू टैक्स जोटा कि इट वाज यूजुअली कलेक्टेड इन काइंड एंड 1/6 इट देखछि 1/6 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वाज टेकन बाय द स्टेट एटा मन रखिबो 1/6 भाग हिरण्य होछि कैश टैक्स paid by farmers traders and merchants बळी होछि another form of tax जो डिटेल इनफॉरमेशन आपरे किंतु एटा मन रखियो बळी भी एटा गोटे फॉर्म ऑफ टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट रेवेन्यू केमते डिस्ट्रीब्यूट करा जाउतला चारिटा पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करा जाउतला गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सैलरीज दिया जाउतला आउ जो लोक माने जो शिक्षित लोक माने से टाइम रे थिले मेन ऑफ लर्निंग आउ जो स्कॉलर्स माने थिले तांको रिवार्ड दिया जाउतला रिलीजियस चैरिटेबल एक्टिविटीज को दिया जाउतला जुडिशियल सिस्टम ड्यूरिंग हर्षस रियाइन सेटा गुप्त पीरियड थर भी आहुरी स्ट्रिक्ट थिला पनिशमेंट जेमति कि बैनिशमेंट म्यूटिलेशन इम्प्रिजनमेंट ट्रायल ए सब से टाइम रे दिया जाउतला रिलीजियस पॉलिसी हर्ष से लॉर्ड शिवंकर डिवोटी थिले एंड तांको इन्फ्लुएंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द राजश्री एंड द ह्वेनसांग से कोन कले महायान बुद्धिज्म को से टाइम रे एम्ब्रेस कले तांकर कन्वर्शन परे भी से बाकी आउ जो रिलीजन्स गुडी को थिला से तांको प्रति भी काफी टॉलरेंट थिले एंड ही रेस्पेक्टेड बुद्धिस्ट जैन्स ब्राह्मण्स से समस्त को गोटे टाइप रे रेस्पेक्ट दोथिले इक्वली रेस्पेक्ट करूथिले एंड रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड डिस्कशंस अमंग स्कॉलर्स रिलीजियस टॉलरेंस थिला तो एटु जानिले देन फर्स्ट से कोन लॉर्ड शिवंग डिवोटी थिले तापरे से कोन गले ही एम्ब्रेस्ड महायान बुद्धिज्म असेंबलीज कनौज असेंबली 643 सीई हर्ष गोटे ग्रैंड बुद्धिस्ट असेंबली कनौज रे ऑर्गेनाइज करिथिले महामोक्ष परिषद एट प्रयाग प्रति 5 वर्ष को थरे हर्ष गोटे ग्रेट रिलीजियस असेंबली ऑर्गेनाइज करूथिले कोठी प्रयाग रे एंड ए इवेंट रे से कोन करूथिले इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करूथिले जो बुद्धिस्ट मंक मान को ब्राह्मण्स आउ गरीब लोक मान को आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन हर्ष आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर भी बहुत फोकस करथिले अटेंशन दोथिले टू मेंटेन अ स्ट्रांग एंड डिसिप्लिन आर्मी सिंस तांकर जो एंटायर एम्पायर थिला से गोटे बहुत बड़ एरिया को कवर करूथिला एंड वाज सराउंडेड बाय पावरफुल रूलर्स गोटे स्ट्रांग मिलिटरी बहुत इंपोर्टेंट थिला एंड ह्वेनसांग को अकॉर्डिंग हर्ष गोटे बड़ लार्ज आर्मी से पोजेस करूथिले consisting of different divisions army follow traditional chaturanga system which includes elephant cavalry infant and chariots eta mone rakhibo chaturanga system composition of the army elephant thile cavalry thile infantry chariots e sabu component thila army ro military officers jemti ki simhanand से कमांडर इन चीफ थिले कुंताल वाज द चीफ कैवलरी ऑफिसर स्कांदगुप्ता से एलिफेंट कॉर्प्स को कमांड करूथिले ऑर्डिनरी सोल्जर जो थिले दे आर नोन एज द छातास एंड द भातास इन्फेंट्री ऑफिसर्स तांकू बालाधी कृतस एंड द महाबालाधिकृतस कुहा जाउथिला एंड कैवलरी ऑफिसर्स माननकू बृहदीश्वरस कुहा जाउथिला प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव थिला हर्ष तांको एम्पायर को बहुत गुडे छोट छोट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रे डिवाइड करथिले ऑल्दो एग्जैक्ट नंबर जणा नाही किंतु एटा मने रखिबो कि एम्पायर को से एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से डिवाइड करथिले एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन प्रोविंस भुक्ति होची प्रोविंस होची एम्पायर को एमदी प्रोविंसेस रे डिवाइड करबा आ भुक्ति होची ईच प्रोविंस को डिवाइड करबा इनटू स्मॉलर यूनिट्स ताको कुआ जाउतला भुक्ति तापरे आसीबो विषय होची जेतले भुक्ति को डिवाइड कर दिया जाए ताहले ईच यूनिट को कुआ जाए विषय तापर होची पाठक जेतले विषय को डिवाइड करा जाए इनटू पाठकस आ विलेज होची स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रे ऑफिशियल्स माने अपॉइंट होतिले ग्रास रूट लेवल रे हर्षचरित ए जिंसटा को मेंशन करिछि सच एज भोगापति आयुक्त प्रतिपालक पुरुष ठीक अछि सिटीज एंड अर्बन लाइफ रे ह्वेनसांग से गोटे विविड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करंती ऑफ सिटीज एंड टाउन्स ड्यूरिंग द हर्षस रियाइन राइज ऑफ कनौज
हर्षଙ୍କ टाइम रे कनौज कौन कला पाटलिपुत्र को रिप्लेस कला एज द मोस्ट इंपोर्टेंट सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया। कनौज फेमस एइथ पई हैला काई कि ना ता पाखरे मैग्निफिसेंट पैलेसेस थिला, ब्यूटीफुल गार्डन्स थिला, म्यूजियम्स एंड एजुकेशन और लर्निंग रो सेटा सेंटर थिला। सो कनौज एज अ सिटी से कौन हैला पॉलिटिकल पावर और कल्चरल एक्सीलेंस रो गोटे ब्यूटीफुल सिंबल हिसाब रे प्रूव हेइतला। स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज जेमति कि स्ट्रांग आउटर वॉल्स थिला फॉर प्रोटेक्शन, गेट्स, streets और lanes narrow थिले, residential houses, wooden balconies, walls coated with lime plaster, public building, large public buildings थिला, burned bricks, red sandstone, marble रे सेउडा बना हैतला। public welfare measures से टाइम रे निया जाउतला। हर्ष is remembered not only as conqueror but also a welfare oriented ruler। rest houses बा धर्मशाला से टाइम रे थिले। देन रिलीजियस पॉलिसी ऑफ हर्ष में देखिबा कि से सिग्निफिकेंट चेंज आसीथिला। अर्ली रिलीजियस बिलीफ रे फर्स्ट से कोन थे शिव को डिवोटी थिले एंड फॉलोड हिंदू रिलीजियस ट्रेडिशन, तापरे से बुद्धिज्म बा महायान बुद्धिज्म को से कन्वर्ट हे गले। बुद्धिस्ट असेंबली में देखले 643 सीई रे से ग्रैंड बुद्धिस्ट असेंबली कनौज रे ऑर्गेनाइज करिथिले। महामोक्ष परिषद भी हमें देखि कि 5 वर्ष को थरे से गोटे ग्रेट रिलीजियस असेंबली एट प्रयाग एवरी 5 इयर्स से ऑर्गेनाइज करुथिले एंड दिस गैदरिंग वाज नोन एज द महामोक्ष परिषद। सोसाइटी कौन थिला से टाइम रे अकाउंट ऑफ वेनसांग को अकाउंट रो हमें देखिया को किछि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमको मिले कि से टाइम रे कौन सोशल स्ट्रक्चर चली थिला। Indian society generally peaceful and orderly. People were considered honest and law abiding. Social harmony largely से टाइम रे prevail करूतला despite existence of rigid caste system. Caste system formally established हेतला during Harsha's reign. Traditionally fourfold varna system थिला continued to guide the social organization. लोक माने generally hereditary occupation को follow करूतले associated with their caste. वुमेन का स्टेटस से टाइम रे गोटे मिक्स्ड पिक्चर प्रोवाइड करे। वुमेन फैमिलीज रे रिस्पेक्ट तांको मिलुथिला बट रेस्ट्रिक्टिव थिला किछि भी किछि प्रैक्टिसेस जोटा सेतबेले भी एग्जिस्ट करूथिला। लाइफस्टाइल ऑफ पीपल हर्षंकर एम्पायर रे जो लोक माने थिले दे जनरली लिव्ड सिंपल बट कंफर्टेबल लाइव्स। एग्रीकल्चर फॉर्म्ड द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी व्हाइल ट्रेड एंड क्राफ्ट्स आल्सो फ्लोरिश्ड। एटा एते भी इंपोर्टेंट नुहे सो जस्ट वी विल स्किप इट। एजुकेशन 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 ऑक्युपाइड इंपोर्टेंट प्लेस। लर्नर्स माननकू रिस्पेक्ट दिया जाउतला। स्कॉलर्स से माने प्रेस्टीज एंजॉय करथले। किंग्स नोबल्स वेल्दी इंडिविजुअल्स से माने कोन करथले दे ऑफन सपोर्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थ्रू ग्रांट्स एंड डोनेशंस। नेचर ऑफ एजुकेशन इन लार्जली रिलीजियस थिला एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मोनास्ट्रीज टेंपल एंड विहार सहित अटैच्ड थिला से टाइम रे। Harsha as a patron of education, Harsha was one of the greatest patrons of education in ancient India. से believe करथले कि learning is very important. As a result से कौन करथले generous financial support provide करथले। हर्ष as a patron of literature, हर्ष केवल रूलर नथिले से जने स्कॉलर और राइटर भी थिले। तांकर कोर्ट गोटे बहुत इंपोर्टेंट सेंटर थिला फॉर लिटरेरी एंड कल्चरल एक्टिविटीज एंड मेनी डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स रिसीव्ड रॉयल पैट्रोनेज ड्यूरिंग हिज रियाइन। बाना जे कि कोर्ट पोएट थिले हर्षंकर। The famous literary figure in Harsha's court poet was him. Harsha as an author से जने निजे ही जने talented writer थिले and he composed several Sanskrit plays that reveal the literary skill and cultural interest. Priyadarshika, the play deals with the themes of romance, court life and
Royal relationships. Ratnavali, it's also a romantic drama that portrays palace life and human emotions. Nagananda unique because it combines Buddhist ideals with traditional Sanskritic dramatic conventions. Now Nalanda University से ता peak को पहुंची थिला of its fame during the reign of Harsha, and it became one of the greatest centers of learning in the ancient world attached and attracted students from across Asia. तार location थिला नालंदा जोटा कि एबे present day बिहार रे अछि. Take a few minutes break, then we will start with the Pala dynasty. Okay, let's start. Pala dynasty. हर्षंकर डेथ जोटा 647 सीई रे हितला तापर नॉर्थ इंडिया वंस कोन हैला पुनी थर पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड हे गला एंड सेवरल रीजनल पावर दे रोज इमर्ज्ड एंड कंपीटेड फॉर सुप्रीमेसी. तांको भितरु तीनिटा पावरफुल डायनेस्टीज थिले जे कि पॉलिटिकल सीन को से टाइम रे डोमिनेट करथिले. फर्स्ट द पालास ऑफ बंगाल, द प्रतिहारास ऑफ राजस्थान एंड द राष्ट्रकूटस ऑफ द डेक्कन. And ए जो तीनिटा डायनेस्टीज रहिला, they engaged in the long struggle known as the tripartite struggle to control over what? Kannauj and the fertile Ganga Yamuna Doab region. And Palas ए तीनटांग भितरु most powerful dynasty हिसाब रे emerge कला in eastern India and control the vast territories of Bengal and Bihar. Establishment. Political situation before the rise of the Palas. ता पूर्वरु पॉलिटिकल सिचुएशन कोन थिला. पाला डायनेस्टी र राइज पूर्वरु बेंगल शशांक को अंडर रे रूल होतला, द रूल ऑफ गौड़ा. शशांक को डेथ परे बेंगल फेल इनटू अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल डिसऑर्डर. देयर वाज नो स्ट्रांग सेंट्रल अथॉरिटी एंड न्यूमरस पेटी चीफ्स फॉट ईच अदर फॉर पावर. कंटिन्यूअस वॉरफेयर से टाइम रे चलीथिला. लोक माने और लोकल चीफ्स से रियलाइज कले कि गोटे स्ट्रांग रूलर अंडर रे ही पीस रिस्टोर हे परिबो. इलेक्शन ऑफ गोपाल 750 सीई. 750 सीई रे कोन हैला किछि इन्फ्लुएंशियल चीफ्स और नोबल्स एकाठी आसिले एंड दे इलेक्टेड गोपाल एज देयर किंग.
ए इवेंट बहुत सिग्निफिकेंट थिला काना गोपाल वाज वन ऑफ द फ्यू रूलर्स इन इंडियन हिस्ट्री जे कि चूज करा जाइतिले बाय इलेक्शन रादर देन हेरेडिटरी सक्सेशन। टेरिटोरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पालर्स से गोटे बड़ पार्ट रूल करुथिले ईस्टर्न इंडिया रे एंड तांकर कैपिटल थिला पाटलिपुत्र। एम्पायर बेंगल बिहार पार्ट्स ऑफ आसाम पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड पोर्शंस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया को कवर करुथिला। लैंग्वेज इंपोर्टेंट लैंग्वेज जेमति कि संस्कृत प्राकृत और पाली से टाइम रे थिला। संस्कृत मेनली लिटरेचर और एडमिनिस्ट्रेशन पे यूज होतला एंड पाली लैंग्वेज इंपोर्टेंट थिला बिकॉज ऑफ व्हाट बिकॉज ऑफ बुद्धिज्म। रिलीजन पालर्स माने डिवोटेड फॉलोअर्स थिले एंड पैट्रन्स थिले महायान बुद्धिज्म रो and they played a major role in preserving and spreading Buddhism at a time when it was declining in many parts of India. धर्मपाल 770 टू 815 सीई एक्सपांशन ऑफ एम्पायर जति देखिबा धर्मपाल जे कि गोपालंकर सन थिले जने इंपोर्टेंट रूलर थिले तांको लीडरशिप अंडर रे पाल किंगडम रैपिडली ग्रो कला एंड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रांगेस्ट पावर्स इन इंडिया। से डायरेक्टली बंगाल एंड बिहार को कंट्रोल करुथिले एंड ही आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन्फ्लुएंस ओवर कनौज बाय प्लेसिंग अ नॉमिनी रूलर देयर। पॉलिटिकल सक्सेस धर्मपालंकर पावर इट बिकेम सो ग्रेट कि आउ जो रूलर्स माने थिले से तांकर सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कले। एमंग दोज हु एक्नॉलेज्ड हिज अथॉरिटी वे रूलर्स फ्रॉम पंजाब राजपूताना मालवा बेरार ए माने समस्त तांकर रूल सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करथिले। रॉयल टाइटल जेमति कि तांको परमेश्वर परम भत्तारक महाराज धीराज ए सब टाइटल्स तांको मिलिथिला। धर्मपाल as patron of Buddhism धर्मपाल गोटे बुद्धिज्म रो पैट्रन थिले। ही वाज द ग्रेटेस्ट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडियन हिस्ट्री। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल कोन करथिले ही फाउंडेड द विक्रमशिला महाविहार जोटा कि प्रेजेंट डे बिहार रे अछि। ए इंस्टीट्यूशन टा इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग इन एशिया। सोमपुरा महाविहार धर्मपाल सी सोमपुरा महाविहार भी एस्टैब्लिश करथिले एट पहाड़पुर in present day Bangladesh and it is one of the largest Buddhist monasteries in South Asia. ओडंतपुरी मोनास्ट्री another contribution तांकर थिला ओडंतपुरी मोनास्ट्री जोटा बिहार रे अछि। पैट्रोनेज ऑफ स्कॉलर्स जेमति कि हरीश भद्र जे कि इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दैचंती बुद्धिस्ट लिटरेचर को ही पैट्रोनाइज्ड हिम। देवपाल देवपाल एक्सपांशन ऑफ द एम्पायर देखियो देवपाल कोन थिले धर्मपालंकर पुओ थिले एंड ही वाज द successor also. He further expanded the empire and is considered one of the most successful Pala rulers. तांकर authority extend हेतला eastward up to Kamarupa, Assam. मिलिटरी अचीवमेंट्स रे से कोन कर दिले राष्ट्रकूटस मानको चैलेंज करथिले एंड से तांको डिफीट भी करथिले। He defeated Rashtrakuta ruler Amogha Varsha by forming alliance with kingdoms that considered the Rashtrakuta their common enemy. पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म हमें देखिले से थिले एंड कनेक्शन विद द साउथ ईस्ट एशिया रे इंपोर्टेंट अचीवमेंट तांकर एया कि देवपाल जे थिले सी तांकर कल्चरल टाइज को स्ट्रेंथन करथिले विद साउथ ईस्ट एशिया एंड से पांचटा विलेज पांचटा गांव से ग्रांट करथिले टू बालापुत्र देव द रूलर ऑफ द शैलेंद्र डायनेस्टी ऑफ सुमात्रा एंड से सो विलेज रो जो रेवेन्यू आसुतला से गोटे बुद्धिस्ट मोनास्ट्री को मेंटेन करिबारे यूज होतला एट नालंदा। डिक्लाइन ऑफ पाला डायनेस्टी देवपालंक परे डायनेस्टी ग्रेजुअली वीक हे गला। बहुत गुडे रूलर्स से कोन तांका पारे मिलिटरी एबिलिटी नथिला लीडरशिप क्वालिटी नथिला तो डायनेस्टी कोन हैला वीक हे गला। विक्रमपाल से गोटे बहुत छोट पीरियड जाके रूल करथिले सी तापरे तांकर वर्ल्डली लाइफ को रिनाउंस करी कि से गोटे एसेटिक हे गले। नारायणपाल सी पीसफुल थिले रिलीजियस थिले बाय नेचर हाउएवर तांकर मिलिटरी एग्रेसिवनेस किछि नथिला। एक्सटर्नल थ्रेट भी थिला पालस मानंकु जेमि प्रतिहारस राष्ट्रकूट से माने तांकर एनिमीज थिले एंड राइज ऑफ रीजनल चीफ्स गायना लोकल चीफ्स जे कि पाला अथॉरिटी को वंस से तांको सुप्रीमेसी को अथॉरिटी को एक्सेप्ट करथिले से कोन हेले दे began asserting their influence independence and influence revival under the Mahipala first देन कोन हैला महिपाल फर्स्ट को अंडर रे डायनेस्टी रो फॉर्च्यून्स पुन थरे रिवाइव हैला। महिपाल फर्स्ट केतले विक्रमपाल सेकंड करो पुओ थिले। Conflict with Rajendra Chola, one of the most important event of Mahipala's reign was the invasion of North India by the Rajendra Chola first between 120 to 125 CE.
जेतेबेले राजेंद्र चोल गैंगेस पाखरे पहुंचले महिपाल से तांको कोन कले सक्सेसफुली प्रिवेंट कले एंड डिफीट कले द चोलस फ्रॉम एडवांसिंग फर्दर एंड एटा गोटे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थिला लास्ट फेज ऑफ द डायनास्टी महिपाल फर्स्ट सी कोन तापरे बहुत आहुरी वीक रूलर्स आसिले तो एम्पायर रो स्ट्रेंथ आहुरी वीक हे गला रामपाल लास्ट इंपोर्टेंट रूलर थिले पाल डायनास्टी रो से अप्रोक्सीमेटली 53 इयर्स रूल करथिले बट ही इज नॉट इंपोर्टेंट काइना डायनास्टी तापरे फॉर्मर पावर तार आगुरु जहा पावर थिला सेटा से रिगेन करि परला नाही एंड ऑफ द डायनास्टी मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी रे सेना डायनास्टी कोन हैला बंगाल रे पावरफुल हे गला तार जो रूलर थिले विजय सेना से कोन कले जो लास्ट पाल रूलर थिले मदन पाल तांको एक्सपेल कर देले एंड दिस मार्क्ड द एंड ऑफ द पाल रूलर इन बंगाल रिलीजन अंडर द पालस वेर अमंग द ग्रेटेस्ट पैट्रन्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म एटा हमें देखि सारचे देन हरिभद्र से गोटे बुद्धिस्ट फिलोसोफर थिले हरिभद्र जे कि धर्मपाल को स्पिरिचुअल गाइड देइतले डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म ऑल्दो बुद्धिज्म अर्ली पाल पीरियड रे फ्लोरिश करूतिला तापर से डिक्लाइन करी गला गोटे इंपोर्टेंट रीजन तार थिला कि बहुत मर्चेंट्स और आर्टिसंस से माने कोन हेले से माने इस्लाम को कन्वर्ट हे गले एज अ रिजल्ट बुद्धिस्ट गोटे मेजर सेक्शन ऑफ इट सपोर्ट बेस को लूज कर देला Art and architecture, Pala period is famous for its remarkable contribution to art and architecture. Artistic tradition of the Palas were heavily influenced by the Gupta art. Important artists के थिले धीमान and Vitapala. Then Pala school of sculpture रे Pala style became famous for graceful images, fine detailing, bronze sculptures, Buddhist iconography. Literature तांको टाइम रे remarkable थिला literary और intellectual achievements and rulers से माने पैट्रोनाइज करूथिले स्कॉलर्स मानको फिलोसोफर एंड रिलीजियस थिंकर्स मानको फिलोसॉफिकल वर्क्स रे अगम शास्त्र तक के लिखितले गौड़ा पद लिखितले देन न्याय कुंडली को के लिखितले श्रीधर भट्ट लिखितले एंड दीज वर्क्स कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इंडियन फिलोसॉफी मेडिकल लिटरेचर भी सेही टाइम रे इंपोर्टेंट थिला चक्रपाणी दत्ता सुरेश्वर गदाधार वैद्य जिमुता वाहन ए स्कॉलर्स माने से कोन करतले दे एनरिच द फील्ड ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन संस्कृत लिटरेचर पाला स्ट्रांगली सपोर्ट द संस्कृत लर्निंग बहुत बुद्धिस्ट तांत्रिक टेक्स्ट अछि जोड़ा कि कंपोज्ड हेछि और ट्रांसलेट हेछि संस्कृत को ड्यूरिंग दिस पीरियड महिपाल गीत होछि इट इज अ कलेक्शन ऑफ फोक सॉन्ग सेलिब्रेटिंग द किंग महिपाल रामचरितम ताकू के लिखितले संध्याकार नंदी गोटे इंपोर्टेंट लिटरेरी वर्क एटा गोटे ऑफ द लेटर पाल पीरियड एंड इट इज अ बायोग्राफी ऑफ किंग रामपाल टेक 2 minutes break The Rashtrakuta dynasty 750 CE to 973 CE. Rashtrakutas they were the most powerful dynasty of early medieval India. से माने डेकन रीजन रो गोटे लार्ज पार्ट को रूल करूथिले बिटवीन 8th to 10th century CE जोटा की बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करिथिला इन पॉलिटिक्स कल्चर लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर से टाइम रे राष्ट्रकूटस लॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रगल रे इन्वॉल्व हेतिले विथ द पालास ऑफ बंगाल हमें देखिले then the Pratiharas of Rajasthan for the control of Kannauj and a conflict को कौन कहउतले हमें ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल एंड ए जो कंटिन्यूअस राइवलरी थिला ए जो तीनटी डायनास्टीज को भी it weakened all of them and prevented the emergence of strong and unified empire. Arab traveler अल मसूदी जे कि इंडिया विजिट करिथिले सीए आंकर जो हॉस्टिलिटी माने जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ताकू रिकॉर्ड करिसंती बिटवीन राष्ट्रकूटस एंड द प्रतिहारस origin of the राष्ट्रकूटस माने origin केमिति कले originate केमिति कले राष्ट्रकूटस claim descent from the Rastikas or Rathikas
गोटे एंशिएंट क्लैन जोटा कि मेंशन हेची एडिक्ट्स ऑफ अशोका रे दे बिलोंग टू द कन्नड़ा स्पीकिंग रीजन ऑफ द डेक्कन इनिशियली से माने फ्यूडेटरीज हिसाब रे काम करूतिले ऑफ वेस्टर्न चालुक्यज ऑफ वातापी बा बादामी ओवर टाइम से माने स्ट्रांग हेई चलिले एंड इवेंचुअली से चालुक्य ओवरलॉर्ड्स मानु को ओवरथ्रो करिके तांकर इंडिपेंडेंट किंगडम को एस्टैब्लिश कले राइज ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी दांती दुर्ग 735 टू 756 सीई ऑल्दो जो आगुरु राष्ट्रकूट रूलर्स एक्जिस्ट करुथिले किंतु तांकर ट्रू फाउंडर थिले दांती दुर्ग से तांकर करियर को स्टार्ट करथिले गोटे छोटो टेरिटोरी रो जोटा कि बेरार रे थिला चालुक्य रूलर विक्रमादित्य सेकंड कर डेथ परे दांती दुर्ग एडवांटेज नेले एंड ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन एंड से किंगडम को एक्सपांड कले मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट ऑफ दांती दुर्ग गुर्जर किंगडम ऑफ नंदीपुरी मालवा ईस्टर्न मध्य प्रदेश बेरार गुजरात 750 सीई रे सी गोटे बहुत ही पावरफुल रूलर भाबरे एस्टैब्लिश हेई सारिथिले ही हैड बिकम द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द सेंट्रल इंडिया चालुक्यस मानकर डिफीट देखिबा दांती दुर्ग से कीर्ति वर्मन सेकंड को डिफीट करथिले जे कि लास्ट चालुक्य रूलर थिले ऑफ वातापी एंड दिस विक्ट्री मार्क्ड द एंड ऑफ द चालुक्य सुप्रीमेसी इंपीरियल टाइटल तांको मिलिथिला महाराज धीराज परमेश्वर परम भत्तारक मैरिज अलायंस से टाइम रे ते चलथिला हमें देखिथिले पावर को मल्टीप्लाई करिया पई कि दांती दुर्ग से तांकर डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्ट्रेंथन करिथिले पल्लवस मानक सांगे रे तांकर झियो को बाहा देकी कहा को नंदीवर्मन सेकंड को जे गोटे पल्लव रूलर थिले कृष्णा फर्स्ट 756 रु 775 सीई दांती दुर्गंकर डेथ परे तांकर अंकल कृष्णा फर्स्ट से रूलर हेतिले एंड एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से कंटिन्यू करिथिले मिलिटरी अचीवमेंट तांकर थिला कि से वेस्टर्न गंगास ऑफ मैसूर तांको डिफीट करिथिले एंड राष्ट्रकूट अथॉरिटी को कंसोलिडेट करिथिले इन सदर्न डेक्कन कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्किटेक्चर कृष्णा फर्स्ट से फेमस थिले काहेकिना से मैग्निफिसेंट कैलासनाथ टेंपल जोटा एलोरा रे अछि से ताको कंस्ट्रक्ट करथिले गोविंद सेकंड कृष्ण फर्स्ट को परे रूलर हेतले गोविंद सेकंड से ईस्टर्न चालुक्यस को डिफीट करितले किंतु तांकर एडमिनिस्ट्रेशन रे एतेटा इंटरेस्ट नथिला सो से कोन करतले गवर्नमेंटल रिस्पांसिबिलिटीज को तांकर जो सान भाई थिले ध्रुव तांको दे देथिले तापरे कोन हैला ध्रुव तांको रिमूव करिकि से निजे राजा हेतिले ध्रुव धरवर्ष Dhruva was one of the greatest ruler of the Rashtrakuta dynasty. तांका leadership under a empire new level of power and prestige को पहुंची थिला. Conquest in South India. Dhruva defeated Western Gangas, Pallava ruler Dantivarman and ruler of Vengi. Entry into North Indian politics. तांकर अथॉरिटी को एस्टैब्लिश कला परे साउथ इंडिया रे ध्रुव कोन कले तांकर अटेंशन को नेले नॉर्थ इंडिया को ए टाइम रे पालज और प्रतिहार से माने कनौज ऊपर से कोन करथिले फाइट करथिले कंपीट करथिले से टाइम रे ध्रुव से दी जन को डिफीट कर देले वत्स राजा ऑफ द प्रतिहारस एंड द धर्मपाल ऑफ द पालज ठीक अछि दिस मेड राष्ट्रकूटस एन इंपोर्टेंट पार्टिसिपेंट इन द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल सक्सेशन तांकर डेथ परे गोविंद थर्ड आसिले एज अ किंग एज हिज सक्सेसर and he marked the most glorious phase of Rashtrakuta history and he regarded as one of the greatest military commanders of early medieval India तांकर southern campaign रे पल्लवा ruler दांतिवर्मन को से defeat करिथिले आ बाकी southern kingdoms को ruler को भी से defeat करिथिले as a result he became the undisputed ruler of Deccan expansion of the empire गोविंद थर्ड को अंडर रे राष्ट्रकूट empire maximum territorial extent जाए पहुंचीथिला The empire enjoyed political stability and military supremacy. Amogha Varsha first. Amogha Varsha long ruling monarch भितरु जणे and से around 64 years से rule करिथिले. Early challenges तांको थिला first 20 वर्ष तांकर जो रियाइन रो he marked by conflicts with the western Gangas तापर eventually peace आसिला after a marriage alliance. Amogha Varsha से तांकर daughter को गंगा प्रिंस को सहित मैरिज करैथिले अमोघ वर्ष as an author से जने distinguished writer थिले कविराज मार्ग earliest available work on Kannada poetics landmark text in Kannada literature प्रश्नोत्तर मल्लिका ये गोटे संस्कृत work and it deals with philosophical and ethical questions कृष्ण थ्री last great ruler थिले राष्ट्रकूट डायनास्टी रो कैंपेन अगेंस्ट चोलस कृष्ण थ्री कौन करथिले से मेजर कैंपेन लॉन्च करिथिले अगेंस्ट चोलस विद द सपोर्ट ऑफ हिज ब्रदर इन लॉ बुतुंगा कैप्चर ऑफ इंपोर्टेंट सिटीज रे कांची एंड थंजावुर को से कैप्चर करिथिले बाय फोर्स बैटल ऑफ
तकोलम 949 सीई रे जोटा हेतला एटा गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट इवेंट थिला से टाइम रे ऑफ हिज रियाइन वाज द बैटल ऑफ तकोलम ए बैटल रे कृष्णा 3 डिफीट करथिले चोला प्रिंस राजादित्य को एंड विक्ट्री एस्टैब्लिश राष्ट्रकूट डोमिनेंस ओवर नॉर्दर्न तमिलनाडु एडवांस टू रामेश्वरम कृष्ण 3 तापरे साउथ गले आज रामेश्वरम टू कमेमोरेट हिज विक्ट्रीज से गोटे सेठी गोटे पिलर इरेक्ट करथिले इंपोर्टेंस होची कि राष्ट्रकूट अथॉरिटी एक्सटेंड हेतला अक्रॉस ऑलमोस्ट द एंटायर डेकन रीजन ताकपर तांकर डिक्लाइन केमिति आसिला कृष्ण 3 का परे रूलर्स माने वीक थिले से माने जो पावरफुल फ्यूडेटरीज थिले से टाइम रे तांको कंट्रोल करि पारले नाही सो एंड राष्ट्रकूटस कौन रिलीजन फॉलो करुथिले रिलीजियस टॉलरेंस फॉलो करुथिले पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस समस्त को से इक्वली सपोर्ट करुथिले शैविज्म एंड वैष्णविज्म रे देखिबा कि द worship of Shiva and Vishnu was widespread at that time though religious tolerance thila royal seals often depicted Garuda vehicle of Vishnu Shiva in meditative posture हिरण्यगर्भ रिचुअल दांती दुर्गा से कौन करथिले हिरण्यगर्भ रिचुअल गोटे से उज्जैन रे परफॉर्म करथिले एटा मन रखिबो के परफॉर्म करथिले दांती दुर्गा मीनिंग ऑफ द हिरण्यगर्भ ता माने होची गोल्डन वूम एंड ए रिचुअल रे किंग कौन करथिले से गोटे गोल्डन वेसल को एंटर करुथिले आफ्टर एलाबोरेट सेरेमनीज ही इमर्ज्ड एज रीबॉर्न पर्सन पोजेसिंग डिवाइन स्टेटस तुलादान होची राष्ट्रकूटर से तुलादान भी परफॉर्म करुथिले ए रिचुअल रे कोन हुए रूलर से गोल्ड इक्वल टू ही तांकर निजर जेतिकी वेट थिबो से सेतिकी गोल्ड कोन करंती डोनेट कर दियंती टू टेंपल्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैनिज्म किछि राष्ट्रकूट रूलर्स जैनिज्म फॉलो करुथिले दे इनक्लूड अमोघ वर्ष फर्स्ट कृष्णा सेकेंड इंद्र थर्ड एंड इंद्र फोर्थ बुद्धिज्म से टाइम रे डिक्लाइन करिथिला कंसिडरेबली इन द डेक्कन इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट सर्वाइविंग सेंटर वाज कन्हेरी लिटरेचर आमे देखिले अमोघ वर्ष से जणे राइटर थिले कविराज मार्ग प्रसन्नत मल्लिक देन जीना सेना से कौन करथिले आदि पुराण कंपोज करथिले वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट जैन टेक्स्ट गुणभद्र जणे स्पिरिचुअल टीचर थिले ऑफ कृष्णा सेकेंड रोट द महापुराण थ्री जेम्स ऑफ कन्नड़ा लिटरेचर किए थिले थ्री फेमस कन्नड़ा पोएट्स पोन्ना नोन एज द कवि चक्रवर्ती then Pampa called as the Adi Kavi first poet of Kannada literature Ranna another celebrated Kannada poet together they known as the three gems of the Kannada literature architecture under the Rashtrakutas extraordinarily contribute करथिले towards Indian architecture जेमति कि एलोरा केव complex in Maharashtra सेति कोन अछि बुद्धिस्ट केव अछि हिंदू केव जैन केव अछि कैलासनाथ टेम्पल at एलोरा आकु की बिल्ड करथिले कृष्णा फर्स्ट एंड स्पेशल फीचर एटा कि से सिंगल रॉक रु ए टेम्पल टा बना जाईची टेम्पल टा बनेया पई कि मल्टीपल रॉक्स एथिरे यूज हेइ नाही इंपोर्टेंट स्कल्पचर्स मन रखबे एटा बहुत इंपोर्टेंट मेडी स्टार मार्क कर दोची रावण शेकिंग द माउंट कैलाश डांसिंग शिव बाय नटराज विष्णु लक्ष्मी दशावतार सीन्स एलिफेंटा केव्स जोड़ा की मुंबई पाखरे अछि रिप्रेजेंट अनदर ग्रेट अचीवमेंट ऑफ राष्ट्रकूट आर्ट मेनी हिस्टोरियंस कंसीडर द स्कल्पचर्स आर इवन मोर रिफाइंड देन दोज ऑफ द एलोरा फेमस स्कल्पचर्स रे महिषामूर्ति जीवे त्रिमूर्ति शिव एटा होचंती थ्री फेस्ड इमेज ऑफ शिव अप्रोक्सीमेट 25 फीट टॉल considered one of the finest sculptures अर्धनारीश्वर एटा शिव एंड पार्वती को रिप्रेजेंट कराए नटराज इट डिपिक्ट्स शिव एज अ कॉस्मिक डांसर आफ्टर 2 to 3 minutes break we will start the Chalukyas of Badami or Vatapi
चालुक्य और बादामी साउथ इंडिया पॉलिटिकल हिस्ट्री बिटवीन 6 to 9 सेंचुरी सीई जदि आमे देखिया बुझबा इट वाज डोमिनेटेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट कहा भितर चालुक्य और बादामी एंड द पल्लवस ऑफ कांचीपुरम बट ये जो पीरियड टा थिला it was also important for the growth of bhakti movement temple architecture regional language and devotional literature sources important sources jemti inscription Aihole inscription of Pulakeshin II written by Ravikriti temple inscriptions in Kannada Sanskrit Telugu Tamil copper plate grants literary sources Kaviraja Margav then Vikramarjuna Vijaya Mahabharatam of Nannaya foreign accounts ଦେଇଛନ୍ତି Huen Sang Itsing Arab travelers ଯେମିତି Al Masudi and Suleiman rise of Chalukyas Pulakeshin first 543 to 566 CE Pulakeshin first कौन थिले से चालुक्य पावर रो फाउंडर थिले एंड से बादामी पाखरे जो हिल थिला जो पहाड़ थिला ताकू से फोर्टिफाई करथिले एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कदम्बस performed Vedic sacrifices including the Ashmaveda कीर्तिवर्मन फर्स्ट 566 टू 597 से ता परे आसिले से कैपिटल सिटी रो फाउंडर थिले ऑफ बादामी बा पातापी से किंगडम को एक्सपांड करथिले एंड डायनास्टी को आहुरी स्ट्रेंथन करथिले ता परे आसिले पुलेक्सन सेकंड ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द बादामी चालुक्यस से मंगलेश अंकल तांकर जो थिले मंगलेशा तांको डिफीट करथिले एंड ही ऑक्युपाइड द थ्रोन तांकर जो मेजर अचीवमेंट सेगुडिक आइहोल इंस्क्रिप्शन रे रिकॉर्ड हेछि ही डिफीटेड हर्षवर्धन आल्सो ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर एंड से मालवा कलिंग ईस्टर्न डेक्कन ए सब एरिया ऊपर सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करथिले एंड ही आल्सो डिफीटेड द कदम्बस ऑफ बनवासी एंड गंगस ऑफ तलकाड कॉन्फ्लिक्ट विथ पल्लवस पुलेक्शन सेकंड से कांचीपुरम को अटैक करथिले किंतु तांको पल्लवस ए टाइम रे डिफीट करदेले अंडर रूलर महेंद्र वर्मन फर्स्ट This began a long struggle between the Chalukya and Pallavas. Narasimha Varman first कर defeat. Pallava ruler Narasimha Varman first से बादामी को invade करथिले and capture करले. Then Pulakeshin second. He died during the conflict. Pallavas controlled Badami for several years after this victory. Decline केतेबेले आसिला mid 8th century CE रे आसिला जेतेबेले चालुक्यस मानकू ओवरथ्रो करदेले किए राष्ट्रकूटस एडमिनिस्ट्रेशन रे किंग आसीबे सुप्रीम अथॉरिटी हिसाब रे एंड बड़ पुओ जनरली से टाइम रे सक्सेसर होतिले किंतु सेमती किछि स्ट्रिक्ट रूल फॉलो हो नतला प्रिंसेस वर ट्रेंड इन दिस नॉट इंपोर्टेंट रॉयल टाइटल्स रे चालुक्य रूलर्स से माने जेमती कि महाराज सत्यश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ परमेश्वर महाराज धीराज ये सब टाइटल से अज्यूम करूतिले पुलेक्सन सेकंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ द परमेश्वर आफ्टर डिफीटिंग हर्ष रॉयल सिंबल्स चालुक्यस जेमति कि वाइल्ड बोर वराहा रिप्रेजेंटिंग विष्णु पल्लवस तांकर थिला बुल बा नंदी रिप्रेजेंटिंग शिव रोल ऑफ रॉयल वुमेन से टाइम रे वुमेन ऑफ द रॉयल फैमिली ओकेजनली से माने एडमिनिस्ट्रेशन रे पार्टिसिपेट करूतिले वाइड पार्टिसिपेशन नथिला तांकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थिले किंग को से माने असिस्ट करथिले प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जदि हमें देखिबा एम्पायर को डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स से डिवाइड करा जायतिला फर्स्ट आसी जीव तो स्टेट तापर राष्ट्र तापर विषय नाडु देन ग्राम बा विलेज ओके इंपोर्टेंट ऑफिशियल्स रे मन रखियो विषयपति हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट थिले सामंत फ्यूडल लॉर्ड को कुहा जाउतिला ग्रामकुड बा ग्राम पोही विलेज ऑफिशियल्स को कुहा जाउतिला एंड महात्रास इंपोर्टेंट विलेज एल्डर्स तांको कुआ जाउतला विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वेल ऑर्गेनाइज थिला इंपोर्टेंट ऑफिशियल्स जेमति कि कामुंडा बा पोकीगन से थिले विलेज हेडमैन करण बा ग्रामणी विलेज अकाउंटेंट को कुआ जाउतला महापुरुष से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करूतले महाजनम ग्रुप रेस्पोंसिबल फॉर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बाय रेस्पोंसिबल थिले रिलीजन रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी से फॉलो करूतले किंतु से माने शैविज्म वैष्णविज्म जैनिज्म बुद्धिज्म दे आको पैट्रोनाइज करूतले हिंदुइज्म मोस्ट रूलर्स से माने शिव एंड विष्णु कर डिवोटी थिले जैनिज्म रे चालुक्य जेनरसली सपोर्टेड जैनिज्म जो रविकृति थिले तो कोर्ट पोएट ऑफ पुलेक्सन सेकंड से जने जैन थिले जैन टेंपल्स
बहुत गुडे जगार बिल्ट होता से टाइम रे जैन मंक्स भी से रॉयल पैट्रोनेज एंजॉय करुले बुद्धिज्म अकॉर्डिंग टू व्हेन सांग मोर देन 5000 बुद्धिस्ट मंक्स से टाइम रे रहउतले चालुक्य टेरिटोरी रे बोथ हिनायन एंड महायान ट्रेडिशंस को एक्जिस्ट करुला लिटरेचर चालुक्य पीरियड से संस्कृत और कन्नड़ लिटरेचर विटनेस करथिला लैंग्वेज रे संस्कृत टा यूज होतला स्कॉलरली वर्क पई और कन्नड़ यूज होतला रीजनल लैंग्वेज पई की इंपोर्टेंट वर्ड जेंते ऐहोल इंस्क्रिप्शन सप्त वतरम कविराज मार्ग ए सब इंपोर्टेंट वर्क थिला से टाइम रो चालुक्य आर्किटेक्चर रे चालुक्य माने रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन तांगर प्रोवाइड करथिले टू इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर एंड दे पायोनियर द यूज ऑफ द सॉफ्ट सैंडस्टोन से टाइम रे यूज होतला इन टेंपल कंस्ट्रक्शन टेंपल दीटा टाइप रे से टाइम रे डिवाइड हेतला गोटे होची रॉक कट टेंपल आ गोटे होची स्ट्रक्चरल टेंपल ऐहोल बा क्रेडल ऑफ चालुक्यन आर्किटेक्चर ऐहोल होची गोटे इंपोर्टेंट रिलीजियस एंड कमर्शियल सेंटर नियरली 70 टेंपल्स ए एरिया रे मिले लार्ड खान टेंपल होची अर्लीस्ट स्ट्रक्चरल टेंपल तार यूनिक पिलर ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल पई से फेमस दुर्गा टेंपल built on model of Buddhist chaitya semicircular in shape one of the finest temple Megudi Jain temple होची गोटे जैन monument जे कि evolution को show कराए of Chalukya temple architecture बादामी व भातापी it contain 4 famous cave temples आउ ए जो cave डेडिकेट करा जाइछि विष्णु शिव एंड जैन तीर्थंकर मानंकु इंपोर्टेंट स्कल्पचर्स रे केव टेंपल्स रे ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स माने भी अछंती विष्णु रिक्लाइनिंग ऑन आदिशेष नरसिंह वेरियस हिंदू डेटीज एंड ऑल पट्टडकल होची गोटे इंपोर्टेंट सेंटर फॉर रॉयल सेरेमनी एंड टेंपल बिल्डिंग एटा गोटे आज गोटे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विरूपाक्षा टेंपल मने रखिबो इट वाज बिल्ट बाय क्वीन लोको महादेवी एंड विक्रमादित्य सेकंड कर विक्ट्री को कमेमोरेट करा पई एटा बना जायतिला ओवर कांचीपुरम represent the finest example of Chalukya architecture. Papanatha temple, it combined the Nagara and Dravida architectural styles. So it is unique. It contains scenes from the Ramayana. Architectural importance जदि हमें देखिबा कि temples of Pattadakal show a fusion of Nagara and Dravida style. Painting चालुक्य माने पेंटिंग को भी कंट्रीब्यूट करथिले फीचर जेमति कि इन्फ्लुएंस्ड बाय द वाकतक स्टाइल ऑफ अजंता डिपिक्ट सीन ऑफ हिंदू माइथोलॉजी मेनी पेंटिंग पोर्ट्रे डिफरेंट इनकार्नेशंस ऑफ विष्णु Pallavas 6th century CE to 9th century CE Pallavas मानकर origin still a debate among historians आगुरु स्कॉलर माने कोन करथिले तांको कनेक्ट करूथिले with the Pallavas बा पार्थियंस किंतु मोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियन से माने तांको कहंती कि से माने आसीथिले नेटिव साउथ इंडिया रो Pallavas were associated with the Tondai Mandalam जोटा कि गोटे रीजन बिटवीन द नॉर्थ पेन्नर एंड नॉर्थ वेल्लर रिवर्स राइज ऑफ पल्लव पावर रे सिंह विष्णु से जने रूलर थिले जे कि पल्लव पावर को एस्टैब्लिश करथिले ही डिफीटेड द कलाभ्रास एंड कनकर्ड द चोला कंट्री अप टू द कावेरी रिवर तांकर जो विक्ट्री इट ब्रॉट द पल्लवस इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द पंड्यास Mahendra Varman first he was a patron of art literature and music से originally जने जैन थिले किंतु से शैविज्म को एम्ब्रेस करूथिले अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अप्पार तांको टाइम रे पुलेक्सन सेकंड जो चालुक्यंगर किंग थिले he invaded the Pallava kingdom and advanced close to Kanchipuram नरसिंह वर्मन फर्स्ट से जने ग्रेट पल्लव रूलर थिले से कौन करथिले चालुक्यस मानको डिफीट करथिले इन सीरीज ऑफ बैटल्स एंड कैप्चर्ड द कैपिटल बादामी और वातापी तांकर ई अचीवमेंट जोगु तांको वातापी कोंडा टाइटल मिलिथिला कनकरर ऑफ वातापी ही वाज असिस्टेड बाय मानवर्मन जने श्रीलंकन प्रिंस थिले
and also sent naval expeditions to Sri Lanka. Decline of Pallavas Chalukyas को सहित continuously से गोटे war बा fighting रे से involve होतले and later faced invasions from the Rashtrakutas also. Nandivarman III से पांड्यास मानों को defeat करितले at the battle of Sri Purambiam with the help of Gangas and Cholas. Last important Pallava ruler थिले किए अपराजिता. He was defeated and killed by Aditya first of Cholas. After which ए जो तोंडाई मंडलम सेटा चोला रूल अंडर रे पळे आसिला. पल्लवंकर एडमिनिस्ट्रेशन पल्लव मोनार्की हेरेडिटरी थिला. किंग्स डिवाइन ओरिजिन क्लेम करूथिले. तांकर से माने कोन करूथिले किंग्स माने टाइटल्स अडॉप्ट करूथिले जेंति कि महाराज धीराज धर्म महाराज धीराज. किंग्स माने को असिस्ट करिया पे मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिशियल्स माने भी थिले. इंपोर्टेंट ऑफिशियल्स रा में देखिबा अमत्य थिले जे होचंती जहां को कुआ जाउतला काउंसलर मंत्री मिनिस्टर बा डिप्लोमेट को कुआ जाउतला. रहस्याधिकृत प्राइवेट सेक्रेटरी. मणिका पंडरम कप्पन ट्रेजरर. कोडुक्का पिलाई ऑफिसर इन चार्ज ऑफ गिफ्ट्स. जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन रे कोर्ट वेर कॉल्ड एज द अधिकरण मंडपस. कोर्ट को अधिकरण मंडपस बोली कुआ जाउतला से टाइम रे. जजेस मान को कुआ जाउतला धर्माधिकारीन. फाइन्स को कुआ जाउतला करणदंडम एंड अधिकरण दंडम. लैंड ग्रांट्स लैंड को से टाइम रे किंग्स मानकर प्रॉपर्टी हिसाब रे कंसीडर करा जाउतला एंड से लैंड ग्रांट्स मिलुतला. ब्राह्मण्स मानको टेंपल को भी मिलुतला एंड ऑफिशियल्स मानको मिलुतला. ब्रह्मदेव विलेजेस ए विलेजेस मानको कुआ जाउतला जोडा कि ब्राह्मण्स मानको डोनेट करा जाउतिला and usually enjoyed tax exemptions. They often became prosperous centers of learning. Devadana villages, these villages were donated to temples. Revenue from such villages were used for temple maintenance and religious activities. Temples gradually it became the center of rural life. Village administration. The most important local institution was the Sabha. Sabha managed irrigation, land records, tax collection, village justice, endowments. टैंक इरिगेशन को भी से माने इंपोर्टेंस दउतले. एरीपट्टी लैंड स्पेशल लैंड को एरीपट्टी कुआ जाउतला जोडा कि एमती अलगा रखा जाउतला फॉर मेंटेनिंग द इरिगेशन टैंक्स. रेवेन्यू सिस्टम मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू से टाइम रे लैंड टैक्स थिला. स्टेट जनरली 1/6 थ्रू 1/10 एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कलेक्ट करूथिले. पल्लव गोटे स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करूथिले consisting of infantry, cavalry and elephants. Also developed a navy and established dockyards at the Mamallapuram and Nagapattinam. Trade and commerce. Kanchipuram was an important trading center. Merchant guilds. Society. Brahmins mane prominent position से time रे occupy करूथिले in society and often served as scholars, teachers and the royal advisors. Caste system more firmly established ହେଇଥିଲା during that period. Sanskrit important थिला से time रे. Northern cultural influences increase ହେଇଥିଲା. Agriculture, trade, handicraft remained the major occupation. Religion जेमती कि Pallava period it witnessed the rise of bhakti movement. Shaivism और Vaishnavism flourish करूथिला. Nayanmars और Alvars जो famous Nayanmars and Alvars थिले से time period रे they composed the devotional hymns. Although Buddhism और Jainism survive करूथिला किंतु से gradually तांकर influence भी loss ହେଇगला. Education and literature. Kanchipuram became one of the leading centers of learning in South India. Sanskrit colleges, monasteries, mutts, they play important role in education. Important literary works में देखिबा मथा विलास प्रहसनम महेंद्र वर्मन फर्स्ट एटा important मने रखिबो. Then किरतर जुनिया भारादेवी दासा कुमार चरित दांडेन and the Kavyadarsa Danden. Sanskrit enjoyed royal patronage and flourished. Pallava architecture major contribution देथिले से Indian architecture को. Rock cut temples महेंद्र वर्मन first introduce करथिले. Later rulers से माने कौन कले structural temples develop कले. Mamallapuram व Mahabalipuram famous center थिला से time रे of Pallava art and architecture. Shore temple
एटा को किए बिल्ड करथिले राजसिंह वन ऑफ द अर्लीस्ट स्ट्रक्चरल टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया एंड एटा को मेनली शिव एंड विष्णु को डेडिकेट करा जायछि पंचरथ एटा गोटे मोनोलिथिक टेम्पल्स आर पॉपुलरली कॉल्ड एज द पंच पांडव रथस इंपोर्टेंट रथ जेमती धर्मराज रथ अर्जुन रथ भीम रथ ओके टेक 5 minutes break
Bhakti movement in South India. The Bhakti movement emerged in South India between 6th to 9th century CE, जोटा कि emphasize करथिला to personal devotion of God rather than elaborate rituals. Movement को आइजवर्स माने लीड करुथिले, devotees of Vishnu थिले and Nayanmars they were the devotees of Shiva. आइजवर्स कौन थिले? से वैष्णव सेंट पोएट्स थिले जे कि डिवोशनल हिम्स कंपोज करथिले टू प्रेज लॉर्ड विष्णु. एटा हम खाली एमती ऊपर ऊपर देखिबा. हिम्स वर लेटर कंपाइल्ड इनटू नालायर दिव्य प्रबंध. Nayanmars Shiva sent poets थिले who devoted themselves to worship of Lord Shiva. Shaiva canon by Paniru Tirumurai. Hymns of Nayanmars were compiled by the Nambi under Nambi around 10th century CE and जो complete collection को पन्नीरू तिरुमुराई बोली कुहा जाउतिला. Impact of Bhakti movement. Religious impact थिला, personal devotion to God, then complicated rituals रो importance कमिला. Shiva and Vishnu कर worship को से टाइम रे popularize करा जाइतिला. सोशल इम्पैक्ट की जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को इंटीग्रेट करा जाउतिला इनटू कॉमन रिलीजियस फ्रेमवर्क. स्प्रेड religious ideas through the Tamil rather than Sanskrit. Made religions accessible to ordinary people. Political impact थिला कि patronize rulers मान को encourage करुथिले से to patronize the temples. Led to establishment of the Brahmin settlements. Strengthen the connection between the kingship and the religion. Cultural impact एटा थिला कि temples became important centers for society and encouraged the growth of Tamil literature, etc. Adi Shankara से कलाडी in Kerala रे से जन्म नेइथिले. He was one of the greatest philosophers of India. Played an important role in reviving the Hinduism. Unlike Tamil Bhakti Sen, जे कि devotional hymns को preach करथिले, Shankara explained religious ideas through philosophical discussions in Sanskrit. Philosophy Advaita Vedanta कुहा जाउतला शंकर. He propounded the philosophy of Advaita बा non dualism. तांकर main idea थिला Brahman alone is the ultimate reality. The world is Maya बा illusion. The individual soul by Atman and Brahman are ultimately one. Liberation can be achieved through knowledge by Jnana. Sri Ramanuja, तांकर early life रे he was born in the Sri Perumbudur in Tamil Nadu. Initially he studied under the Yadava Praksha, a follower of the Adi Shankara philosophy. Leadership at the Sri Rangam. Tankara, after the death of the Yamunacharya, Ramanuja became the leader of the Sri Rangam monastery. Philosophy Tankara thila ki Vishishta Dvaita. Ramanuja propounded the philosophy of the Vishishta Dvaita by qualified non-dualism. Historical significance. Bhakti movement played a crucial role in shaping the Indian culture. Hinduism को strengthen करथिला. Then devotional worship को popularize करथिला. Regional language, especially Tamil को encourage करथिला. Led to growth of temple center society. Promoted cultural and integration between North and South India. Advent of Arabs and Turks. Introduction. 1206 ରୁ ନେଇକି 1526 ଯାଏ it witnessed the establishment of Islamic rule in North India and a period रे नुआ political institution, administrative system and cultural tradition emerge कला. Rulers of this period were not from single ethnic group. ସେମାନେ ଆରବ୍ସ ରୁ ବି ଥିଲେ, ଟର୍କସ୍ ଥିଲେ, ପର୍ସିଆନ୍ସ ଥିଲେ and ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆନ୍ସ ଥିଲେ ଯେ କି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ through military expeditions and ଏଇଠି ସେମାନେ political authority establish କରିଥିଲେ. Delhi Sultanate 5 dynasties रे divide ହେଇଛି, consisted of 5 dynasty. First ଆମର ଆସିବ slave dynasty, then Khalji dynasty, Tughlaq dynasty, Said dynasty and Lodi dynasty. Advent of Arabs. Background. Arab conquest ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆ and ଆରାବିଆ
भितरे स्ट्रॉन्ग कमर्शियल रिलेशन थिला अरब मर्चेंट्स माने से माने वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट सहित रेगुलरली ट्रेड करुतिले Many Arabs settle on the Malabar coast, married local women. तांकर जो descendants आसिले, they came to be known as the Mappilais बा Moplas, meaning son-in-law. Arab conquest of Sindh in 712 CE से ए जिनसर beginning थिला of direct political contact between India and the Islamic world. Sources of study Al Biruni तारिख उल हिंद एटा मने रखिबो किए कोन सोर्स देइतिले दिस इज वेरी इंपोर्टेंट चाहिले एठी समस्त ए जिंसटा को नोट भी करि परिबे जदि आपनकर नोट्स रे एटा नाही अल बिरुनी तारिख उल हिंद मिनहाज अस सिराज तबकत ई नासिरी जियाउद्दीन बारानी तारिख ई फिरोज शाही अमीर खुसराओ मिफ्ता उल फुतो खजाइन उल फुतो then Shams e Siraj Afif, Tariq e Firoz Shahi, Yahya bin Ahmad Tariq e Mubarak Shahi and Ferishta, History of Muslim Rule in India. एटा होची important source. Arab conquest of Sindh 712 CE. Muhammad bin Qasim, Arab governor of Iraq, Hajjaj bin Yusuf से मोहम्मद बिन कासिम को पठाइतले टू कनकर सिंध मोहम्मद बिन कासिम से दाहर को डिफीट कले जे कि सिंध रो से टाइम रे रूलर थिले एंड जो इंपोर्टेंट सेंटर से टाइम रे थिला जेमती ब्रह्मानबाद एंड देबल ताकू कैप्चर कले महमूद ऑफ गजनी 997 टू 1030 CE rise of Mahmud became ruler of Ghazni after defeating his brother Ismail. He received recognition from the Caliph and assumed the title Yamin ud Dawla. Indian campaign रे महमूद से टोटली 17टा रेड कंडक्ट करथिले इनटू इंडिया मेजर टारगेट ताकर थिला पंजाब मथुरा कनौज और सोमनाथ ऑब्जेक्टिव थिला कि प्लंडरिंग एंड एमपी कैंपेन्स थ्रू रु से कोन करिवे वेल्थ एक्वायर करिवे थ्रू प्लंडर स्ट्रेंथन द गजनाविद एम्पायर एंड गोटे लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करिके रखिबे सोमनाथ रेड 1025 सी महमूद कर मोस्ट famous expedition eta thila was against Somnath temple in Gujarat and which was looted for immense wealth significance thila Mahmud kara raid it was mainly economic and political in nature se kiछि भी permanent territorial expansion कथा भाबी के इंडिया को आसी नथिले decline of the Ghaznavids Mahmud kara death pore succession dispute आसिला जे कि डायनेस्टी को वीक कला घुरिद्स eventually से Ghaznavid territories को conquer करि नेले and 1186 CE रे मोहम्मद घोरी से लाहौर को कैप्चर कले एंड एंडेड द गजनाविद डायनेस्टी मोहम्मद घोरी ताकर इंपोर्टेंस एटा कि मोहम्मद गजनी को भलिया मोहम्मद घोरी से एम करूथिले एस्टैब्लिशिंग परमानेंट पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया जोटा कि मोहम्मद ऑफ गजनी करू नथिले अर्ली कैंपेन्स ताकर थिला से कोन करथिले फर्स्ट मुल्तान को कैप्चर करथिले उच्च को कैप्चर करथिले defeated the Chalukyas of Gujarat at Mount Abu and defeat pore he concentrated on Punjab and North India. Battles of Tarain First Battle of Tarain 1191 CE पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद घोरी को डिफीट करथिले and Ghori was wounded and escaped from the battlefield. Second Battle of Tarain जोटा कि 1192 मन तारा वर्ष परे हेतिला मोहम्मद घोरी कोन हले से रिटर्न कले with better preparation and defeated पृथ्वीराज चौहान and ए बैटल टा एस्टैब्लिश कला टर्किश सुप्रीमेसी इन नॉर्थ इंडिया. जयचंद्र ऑफ कनौज पृथ्वीराज को डिफीट कला परे मोहम्मद घोरी से जयचंद्र को अटैक करथिले जे कि कनौज रो रूलर थिले जयचंद्र को डिफीट कला परे घोरी carried away large amounts of wealth. Rajput kingdoms Turkish conquest पूर्वरु नॉर्थ इंडिया सेवरल राजपूत डायनेस्टी रे डिवाइड हेतिला जेमति कि राजपूत डायनेस्टी से टाइम रे इंपोर्टेंट थिला जेमति चौहान राजस्थान रे थिले तोमारस दिल्ली रे थिले सोलंकीज गुजरात परमारस मालवा घाधवलस कनौज चंडेलास बुंदेलखंड रीजन कौन थिला टर्की सक्सेस रो पॉलिटिकल कॉज जेमति कि लैक ऑफ यूनिटी से टाइम रे नथिला फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट होतिला मिलिटरी कॉजेस जेमति कि स्ट्रांग एंड मोबाइल कैवेलरी इफेक्टिव माउंटेन आर्चरी बेटर मिलिटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन वीकनेस ऑफ राजपूत कौन थिला कि से माने वॉर एलिफेंट्स को ऊपर हेवी डिपेंडेंट थिले लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड मिलिटरी स्ट्रेटजी एटसेट्रा. Slave dynasty 1206 to 1290 CE.
स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाए, was the first ruling dynasty of Delhi Sultanate. Word मामलुक माने कौन, owned or slave. बहुत गुड़े रूलर्स जो डायनेस्टी रो they originally served as military slaves before rising to positions of power. तीनटा इंपोर्टेंट रूलर ए डायनेस्टी जेमती कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड बलबन. कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 टू 1210 सीई से ओरिजिनली जने टर्किश स्लेव थिले जे कि मोहम्मद घोरी को द्वारा परचेज करा जाइतले, हु वाज परचेज्ड बाय मोहम्मद घोरी. Impressed by his loyalty and military ability, घोरी तंको वाइसरॉय हिसाब रे अपॉइंट करिदेले ऑफ इंडियन टेरिटरीज. आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घोरी, ऐबक became the ruler of Delhi and founded the slave dynasty. तांकर अचीवमेंट भितरु से एटा थिला कि एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट रूल इन दिल्ली, कंसोलिडेटेड टर्किश अथॉरिटी इन नॉर्थ इंडिया, कंटिन्यूड द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत. बख्तियार खलजी, मोहम्मद बख्तियार खलजी असिस्टेड ऐबक इन कनकरिंग बिहार एंड बंगाल. सी एसोसिएटेड थिले विथ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी. तांकर 1210 सीई रे तांकर डेथ हेई आइथिला. इतुतमिश, इतुतमिश जने टर्किश स्लेव थिले एंड कुतुबुद्दीन ऐबकंकर सी सन इन लॉ थिले. आफ्टर सेटिंग असाइड द क्लेम ऑफ आराम शाह, ही बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली. से रियल कंसोलिडेशन हिसाब रे हमें तांको पढ़ी थाउ ऑफ दिल्ली सल्तनत. मिलिटरी अचीवमेंट रे इतुतमिश सक्सेसफुली रिबेलियन सप्रेस करथिले एंड ही स्ट्रेंथेंड द सल्तनत. ही डिफीटेड द राजपूत्स ऑफ ग्वालियर, रणथंबोर, Ajmer, Jalore. He also overcame challenges from the Nasiruddin Kabacha of Lahore and Multan, Bengal governors. Mongol policy. जितेबले जलालुद्दीन he sought support against Chengiz Khan. इतुतमिश कौन कले से असिस्टेंस दबा को रिफ्यूज कर देले. This diplomatic decision saved India from possible Mongol invasion. एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स रे जदि हमें देखिबा, सी कुतुब मीनार कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करचंती. सिल्वर टंका एंड कॉपर टंका कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करथिले. एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो थिला सल्तनत रो ताको स्ट्रेंथन करथिले बा स्ट्रांग करथिले. आउरी इंपोर्टेंस, इतुतमिश फाइनली एस्टैब्लिश दिल्ली एज द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर इन नॉर्थ इंडिया. सक्सेशन आफ्टर इतुतमिश, इतुतमिश कर डेथ परे सक्सेशन अनस्टेबल हे गला. राइज ऑफ बलबन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो से टाइम रे चाली थिला. उलुग खान emerged as most powerful noble. 1266 CE रे से कौन हेले, he ascended the throne as Ghiyasuddin Balban. His accession ended the dominance of powerful nobles over the sultan. Balban से जने strong ruler थिले of slave dynasty, से strong monarchy और strict enforcement of authority रे believe करुथिले. मेन ऑब्जेक्टिव तांकर थिला कि केमिति लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करिकि रखिबा एंड सेंट्रल अथॉरिटी को आहुरी स्ट्रेंथन करिबा. मेजर्स टू स्ट्रेंथन द सल्तनत, बलबन undertook continuous military campaigns against the rebellious governors and local chiefs. Balban and law and order. Problem of the Mewatis. Mewatis frequently area plunder करुथिले around Delhi and challenged the Sultanate authority. Balban launched several military campaigns against them. Measures taken destroyed the Mewati strongholds, cleared forests as hiding places, established military colonies. Rajput resistance, Balban Rajput chiefs मान को suppress करथिले, who had built forts and refused to obey the Sultan. Rebellion of Tughril Khan. बलबर तुगरिल खान को अपॉइंट करथिले एज गवर्नर ऑफ बंगाल. हाउएवर तुगरिल खान से रिवोल्ट करले, देन तांकर इंडिपेंडेंस से डिक्लेयर करनेले. सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट, सेवरल एक्सपेडिशंस इनिशियली फेल्ड. बलबन पर्सनली से गोटे कैंपेन लीड करथिले अगेंस्ट द रिबेल्स. तुगरिल खान कैप्चर करि निया गला एंड एग्जीक्यूट कर दिया गला. तापरे बलबन अपॉइंट कले तांकर सन बुगरा खान को एज गवर्नर ऑफ बंगाल. बलबन एंड द मंगोल रिट्रीट. मंगोल सीरियस डेंजर से माने पोज करथिले टू द दिल्ली सल्तनत. तो बलबन कोन कले, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को आहुरी स्ट्रेंथन कले. मेजर्स टेकन, फोर्ट स्ट्रेंथन हला एट दीज प्लेसेस. अ गुडविल मिशन फ्रॉम द मंगोल्स विजिटेड दिल्ली इन 1259 CE. डेथ ऑफ बलबन, बलबन कर फेवरेट सन मोहम्मद खान जे कि गवर्नर ऑफ मुल्तान थिले, ही वाज किल्ड व्हाइल फाइटिंग द मंगोल्स, जे कि बलबन को डीपली अफेक्ट कला एंड ही फेल इल एंड डायड in 1287 CE.
सिग्निफिकेंस ऑफ स्लेव डायनास्टी जदि हमें देखिबा दिल्ली सल्तनत रो फाउंडेशन थिला सेटा टर्किश रूल को कंसोलिडेट करथिला इन नॉर्थ इंडिया इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप करथिला defended India against the Mongol threats, strengthened the position of Delhi as the political center of North India. Khalji dynasty 1290 to 1320 CE. Introduction. Khalji dynasty slave dynasty pare asitila in 1290 CE. Though opposed initially, they were considered Afghan. Khaljis were actually Turks who had settled in Afghanistan and become Afghanized over time. दीटा इंपोर्टेंट रूलर थिले से डायनेस्टी रे होचंदी जलालुद्दीन खलजी एंड अलाउद्दीन खलजी जलालुद्दीन खलजी से बलबन कर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ बलबन सक्सेसर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आसिला दिल्ली रे जलालुद्दीन खलजी जे की कमांडर ऑफ आर्मी थिले से पावरफुल नोबल हिसाब रे इमर्ज कले एंड बिकेम द सुल्तान इन 1290 सीई important feature ताकर थिला कि he founded the Khalji dynasty opposition से face करिथिले because he was considered an Afghan successfully से Mongol invasion को check करथिले in 1292 CE maintained stability during the early years of the Khalji rule death ताकर death परे अलाउद्दीन खलजी से ruler हेतिले and seized the throne rise of अलाउद्दीन खलजी before becoming Sultan अलाउद्दीन खलजी से गवर्नर थिले कारारो अर्ली मिलिटरी सक्सेसेस रे जीव तांगर से मालवा को इन्वेड करथिले एंड ह्यूज वेल्थ एक्वायर करथिले सेठू कंडक्टेड अ सक्सेसफुल रेड ऑन देवगिरी आल्सो 1296 सी रे से मर्डर करथिले जलालुद्दीन खलजी को एंड बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली अलाउद्दीन खलजी मोस्ट पावरफुल रूलर थिले खलजी डायनास्टी रो पॉलिसी टुवर्ड्स नोबल रे से बिलीव करथिले कि जो नोबल्स माने जेतल पावरफुल हे यांती से थ्रोन को थ्रेट ही आंती सो मेजर से नोथले कि सेवरल पावरफुल ऑफिसर्स को से डिसमिस कर देले पनिश्ड द नोबल्स हु फ्रीक्वेंटली चेंज द लॉयल्टीज मैरिज अलायंस को रेस्ट्रिक्ट करथिले अमंग द नोबल फैमिलीज काइना एथिरे कोन हबो पावर मैक्सिमाइज हबो ब्रॉट गिफ्टेड एंड एंडाउमेंट लैंड्स बैक अंडर रॉयल कंट्रोल रिड्यूस द प्रिविलेज ऑफ विलेज चीफ्स एंड लोकल एलिट्स ए जो मेजर से कोन कला पावर नोबिलिटी कर जो पावर थिला नोबल्स मानकर ताकू वीक कला एंड सुल्तान कर अथॉरिटी को फर्दर स्ट्रेंथन कला मंगोल थ्रेट रिपीटेडली मंगोल्स माने से टाइम रे इन्वेड करथुले इंडिया को ड्यूरिंग अलाउद्दीन रियाइन आल्सो इंपोर्टेंट इवेंट जेंदी मंगोल इन्वेजन रिपेल्ड इन 1298 सीई अनदर मेजर इन्वेजन आसिला 1299 रे लार्ज स्केल मंगोल रेड कंटिन्यूड टिल 1307 to 8 सीई मिलिटरी कैंपेन ने हमें देखिले कि सेवरल कैंपेन से कंडक्ट करथिले टू एक्सपैंड हिज अथॉरिटी एंड एक्वायर वेल्थ कन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन देवगिरी 1307 सी रे अलाउद्दीन से मलिक कफूर को पठेले टू कैप्चर देवगिरी यादव किंगडम वाज डिफीटेड एंड देवगिरी को दिल्ली कंट्रोल अंडर रे अणा गला वरंगल 1309 सी रे मलिक कफूर से प्रतापरुद्र देव को डिफीट कले एंड जे थिले काकतीय रूलर ऑफ वरंगल होयसाला किंगडम 1310 सी रे होयसाला रूलर वीरबलल थर्ड सरेंडर्ड एंड पेड ट्रिब्यूट तमिल रीजन ने मलिक कफूर से तमिल कंट्री आड़ को मार्च कले एंड अटैक्ड द चिदम्बरम प्लंडर्ड श्रीरंगम एंड कैप्चर्ड मदुराई Alauddin's administrative reforms. After territorial expansion, Alauddin introduced several reforms to strengthen the administration. कौन मेजर से नहीं थिले से गिफ्टेड और रिलीजियस लैंड को अंडर स्टेट कंट्रोल आनी थिले विलेज हेडमैन मानकर पावर को रिड्यूस करथिले करप्ट ऑफिशियल्स मानन को स्ट्रिक्टली पनिश करथिले गैम्बलिंग इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस को बैन करथिले एंड एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम को एस्टैब्लिश करथिले रेवेन्यू रिफॉर्म्स रे अलाउद्दीन डायरेक्टली कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू फ्रॉम कल्टिवेटर्स ठीक अछि विलेज हेडमेन्स तो एथरे कोन हला ताकर जो ट्रेडिशनल राइट थिला से माने रेवेन्यू कलेक्ट करथिले सेटा लॉस हला देन रेवेन्यू कलेक्शन बिकेम मोर सेंट्रलाइज्ड टैक्स बर्डन फेल ऑन द वेल्दी सेक्शन रादर देन द पुअर पीजेंट्स मार्केट रिफॉर्म्स असथिला वन ऑफ द इंपोर्टेंट मार्केट कंट्रोल सिस्टम जोटा कि कोन पाई कहीं ना ताकू लास्ट स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करियार थिला की प्राइसेस लो बिकॉज़ सोल्जर्स वेर पेड इन कैश मेजर से कोन नहीं थिले एसेंशियल कमोडिटीज रो प्राइस को फिक्स कर देथिले होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को प्रिवेंट करथिले एस्टैब्लिश नेटवर्क ऑफ स्पाइज एंड मार्केट इंस्पेक्टर्स कलेक्टेड डेली रिपोर्ट्स ऑन मार्केट प्राइसेस पनिशमेंट से टाइम रे सिवियर पनिशमेंट मिलुथिला सिग्निफिकेंस की मार्केट रिफॉर्म हेल्प्ड मेंटेन लो प्राइसेस एंड रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द स्टेट
मलिक कफूर अलाउद्दीन कर ट्रस्टेड मिलिटरी कमांडर थिले से डेक्कन कैंपेन लीड करुथिले यादवस काकतीयस होयसाला को डिफीट करिथिले से एक्सपीडिशंस कंडक्ट करुथिले इन द तमिल रीजन एंड बॉट एनॉर्मस वेल्थ टू दिल्ली सक्सेसर ऑफ अलाउद्दीन नॉमिनेटेड सन खिजर खान as successor तांकर डेथ परे मलिक कफूर गवर्नमेंट रो कंट्रोल नेले कफूर वाज assassinated within a short period political instability से टाइम रे पुणी कंटिन्यू कला इवेंचुअली गाजी मलिक पावर को सीज कर नेले एंड ऑफ द खिलजी डायनेस्टी के बेसला 1320 सीई रे जेतल गाजी मलिक किल्ड लास्ट खिलजी रूलर खुसराव खान he ascended the throne as the Ghiyas-uddin Tughlaq. Thus Tughlaq dynasty replaced the Khilji dynasty. Tughlaq dynasty 1320 to 1414 CE. Tughlaq dynasty was found in 1320 CE by Ghiyas-uddin Tughlaq after the fall of the Khilji dynasty. तीनिटा important ruler थिले ए dynasty रो first होचंदी Ghiyas-uddin Tughlaq, then Muhammad bin Tughlaq, then Firuz Shah Tughlaq. Ghiyas-uddin Tughlaq adopt करथिले गोटे policy of reconciliation nobles मानक संगरे and attempted to restore the stability of the sultanate after political turmoil of the Khilji period. तांकर याइनटा शॉर्ट थिला मात्र 5 वर्ष से रूल करि पारथिले 1325 रे तांकर डेथ हे आइतिला एंड तांकर सन जमुना खान तांको सक्सेड करिथिले जौना खान assumed the title of the Muhammad bin Tughlaq. The Muhammad bin Tughlaq, one of the most learned and ambitious ruler thile. He was known for his intelligence, scholarship and innovative ideas. Military successor जदि आमी ताकर देखिबा successfully repelled Mongol attacks in Delhi, maintained territorial integrity of the Sultanate during the early years of the reign. Transfer of capital. Muhammad bin Tughlaq तांकर capital को shift करने इतले from Delhi to Devagiri in Maharashtra. He renamed Devagiri as Daulatabad. Introduction of token currency. Muhammad bin Tughlaq से bronze token currency को introduce करथिले in place of the silver coins. The idea has already been used in China and Iran. Objective होची कि to overcome the shortage of silver to increase the money supply. Agricultural reforms. Muhammad bin Tughlaq attempted to increase the agricultural production. Measures taken established Diwani Amir Kohi, a separate department of agriculture. फार्मर्स मान को लोन एडवांस लोन दिया जाउतला एंड कल्टिवेटर्स मान को हेल्प करा जाउतला इन परचेजिंग सीड्स कैटल इरिगेशन फैसिलिटीज कॉज ऑफ फेलियर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक फर्स्ट से ओवर एम्बिशियस थिले इंप्लीमेंटेशन ताकर पुअर थिला हार्श ट्रीटमेंट दोतिले से एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी से टाइम रे थिला एंड फ्रीक्वेंट रिबेलियन थिला इन डिस्टेंट प्रोविंसेस एंड ताकर 1351 रे डेथ हे गला फिरोज शाह तुगलक सक्सीडेड मोहम्मद बिन तुगलक जने मॉडरेट और कंसिलिएटरी पॉलिसी से अडॉप्ट करुथिले ही प्रिफर्ड स्टेबिलिटी ओवर एक्सपेंशन सो पॉलिसी जो नोबल्स मानक प्रति थिला फिरोज शाह से कोन करथिले से नोबल्स मानकर सपोर्ट को विन करिया को ट्राई करुथिले मेजर्स टेकन कि तांको कन्फिस्केट तांकोटर जो प्रॉपर्टी गुडा कन्फिस्केट करा जाइथिला ताको से रिस्टोर कर देले हेरिडिटरी अपॉइंटमेंट री इंट्रोड्यूस कले ऑफिशियल्स मानकर जो सैलरी थिला ताको बढ़ाइले certain taxes को reduce कले abolished many harsh punishments welfare measures रे फिरोज show special concern for slaves and public welfare also military policy first से wars of expansion को avoid करिया ट्राई करूथिले policy of peace rebellion को suppress करिया ट्राई करूथिले successfully repelled the Mongol invasions also important campaigns रे तांकर Bengal campaign थिला and Sindh campaign थिला both campaigns strengthened the Sultanate authority. Religious policy रे he favored Orthodox Islam. Important measures रे state को Islamic state हिसाब रे से declare करथिले जिजिया नॉन मुस्लिम्स मानक ऊपर से impose करथिले including Brahmins. Banned practices considered un-Islamic. Took action against the heretical groups. However, he did not prohibit the construction of Hindu temples. Patronized the scholars from different backgrounds. Encouraged translation of Sanskrit works into Persian.
पब्लिक वर्क्स फिरोज शाह से पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट पाई कि तांको एपन सॉरी से बहुत गुड़े पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट से टाइम रे कैरी आउट करते जेंति इरिगेशन प्रोजेक्ट हे गला कैनल से कंस्ट्रक्ट करथिले फ्रॉम सतलज टू यमुना रिवर डिक्लाइन आफ्टर फिरोज शाह died in 1388 CE. His policy of hereditary appointment weakened the central authority. Consequence तापर एटा आसिला कि नोबल्स माने पावरफुल ऑलरेडी से लैंड सब तांको देई सारथिले रिस्टोर कर सारथिले तो से तांको पर आउरी पावरफुल हे गले पॉलिटिकल इंट्रिग्स इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंट सक्सेशन डिस्प्यूट हला तिमूर्स इन्वेजन 1398 CE नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह कर याइन रे दिल्ली सल्तनत तिमूर invasion face कला from Central Asia. Timur invaded North India in 1398 CE. Delhi plunder hela and devastated hela. Sultan Nasiruddin se capital को पळेले. Then thousands were killed and large scale destruction took place. Delhi Sultanate severe political and economic damage ताको face करिया को पड़ला. Timur carried skilled Indian artisans to Samarkand and the prestige of Sultanate declined sharply. End of Tughlaq dynasty. Tughlaq dynasty continue in a weakened state after Timur invasion. Eventually dynasty टा end हे गला तापरे तुगलक डायनास्टी पर सईद डायनास्टी एंड लोधी डायनास्टी आसीगले सईद डायनास्टी तुगलक डायनास्टी को सक्सीड कला आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तिमूर इट रूल्ड दिल्ली फ्रॉम 1414 CE टू 1451 CE एंड तार फाउंडर थिले खिजर खान से अपॉइंट हेतले तिमूर को द्वारा एज इज रिप्रेजेंटेटिव इन द पंजाब रीजन 1414 CE रे से दिल्ली को कैप्चर करी के सईद डायनास्टी एस्टैब्लिश करिथिले ही वाज द फाउंडर ऑफ सईद डायनास्टी ओके अदर सईद रूलर्स के थिले सईद डायनास्टी टोटली चारोटी रूलर थिले एंड देयर रूल जनरली वीक थिला सो अथॉरिटी डिक्लाइन हला फीचर्स ऑफ सईद रूल्स जेमति कि से तिमूरी रूलर्स मान को ट्रिब्यूट पे करूथिले कांस्टेंट पॉलिटिकल चैलेंजेस तांको फेस करिया को पडुतला effectively से तांको टेरिटरी एक्सपैंड करि पारु नथिले देयर कंट्रोल ग्रेजुअली बिकेम लिमिटेड टू दिल्ली एंड नियर बाय रीजन्स इंपोर्टेंट सोर्स हमें देखिया को पाइथाउ अंकर जेमति कि हिस्टोरिकल वर्क जेम तारीखी मुबारक शाही एंड रिटन बाय द याहिया बिन अहमद शिरहिंदी से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे अबाउट द सईद रूलर्स एंड कंटेम्पररी इवेंट्स डिक्लाइन ऑफ सईद डायनेस्टी एम्पायर टा लार्जली दिल्ली को ही से कन्फाइन हेगी थिला एक्सपैंड करना थिला सेंट्रल अथॉरिटी वीक हे गला रीजनल रूलर्स बिकेम इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट 1451 CE रे सईद डायनेस्टी इट केम टू एन एंड
Lodi dynasty 1451 to 1526 CE. Lodi dynasty was the last ruling dynasty of Delhi Sultanate. It was found by Bahlul Lodi in 1451 CE. Lodis mane tankar origin thila Afghan ru. Lodis were of Afghan origin. Bahlul Lodi se Lodi dynasty established करिथिले and strengthened the Sultanate. Achievement रे तांकर देखिबा कि he conquered the Sharqi kingdom of Jaunpur, expanded the territory of Sultanate. सिकंदर लोधी 1489 to 1517 CE से गोटे मोस्ट कैपेबल रूलर थिले लोधी डायनास्टी रो से कैपिटल को दिल्ली रु आग्रा को शिफ्ट करथिले इन 1504 CE and strengthened the administration and governance. Ibrahim Lodi last ruler thile Delhi Sultanate ro. His reign was marked by conflicts with nobles and growing political instability. First battle of Panipat के बेतला 1526 CE रे Ibrahim Lodi he fought against Babur. Ibrahim Lodi defeated and killed Babur established करिथिले Mughal Empire in India. तार significance ये है कि first battle of Panipat Delhi Sultanate को end करिथिला and Mughal rule को start करिथिला India रे. Administration of Delhi Sultanate में देखिए nature of state Islamic state थिला Sultan head of the government थिले commander in chief of army थिले and highest judicial authority थिले succession no fixed rule थिला succession ର ସେମିତି କିଛି fixed rule नथिला frequent succession dispute ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆସୁଥିଲା କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ କିଛି fixed rule ନଥିଲା political instability ଥିଲା ସେ time ରେ Ikta system Sultanate administration was based on Ikta system Ikta ହଉଛି ଗୋଟେ territorial assignment जोटा कि officials ମାନଙ୍କୁ दिया जाउଥିଲା मुक्तिज व वलीज सेमाने कोन करथले सेमाने इक्तास को गवर्न करूथले टैक्स कलेक्ट करूथले एंड ट्रूप्स मेंटेन करूथले सुल्तान को पाई खलीसा लैंड सर्टन टेरिटोरीज रिमेन अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सुल्तान ताको खलीसा लैंड बोली कुआ जाउतिला एंड ए जो लैंड रु रेवेन्यू जेतबेले आसे से ऑफिसर और रॉयल ट्रूप्स मानको पाई कि ताको पेमेंट करिबारे यूज हुए रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन Land revenue major source of income thila revenue demand reached half of the produced power of village headmen of intermediaries reduce heitla sei time re heavy taxation sometime result in peasant revolt society under sultanate social structure eta different social groups re divide heitla jemti sultan nobles high officials emane kotha jautile mane privileged class re jautile semane wealth power au luxurious lifestyle gote enjoy kortile nobility initially nobility टर्क्स माने डोमिनेट करथले तापरे अफगान्स पर्शियंस एंड इंडियन मुस्लिम्स माने भी सेतरे इंक्लूड हेले पोजीशन ऑफ इस्लाम emphasized equality among the believers person status depend more on the ability and achievement rather than birth religion islamic influence thila islam introduce करथला concept of monotheism believe in one god important religious movements रे लिंगायत मूवमेंट जोटा कि बसवंग द्वारा फाउंड करा जाइतला इन कर्नाटक तार मेन फीचर थिला कि वर्शिप ऑफ वन गॉड परशिवा रिजेक्शन ऑफ कास्ट डिस्टिंक्शन बेटर स्टेटस फॉर वुमेन भक्ति सेंट्स इंपोर्टेंट सेंट जेमती नामदेव रामानंद religious tolerance many sultans adopted practical policy towards non muslims mohammad bin tughlaq se kon करथले join monks ମାନଙ୍କୁ protect करिया पई कि orders issue करिथिले he also participate in holy celebrations hindus were allowed to maintain temples and perform rituals after paying taxes economic growth sultanate period significant economic development witness करथिला agriculture से time रे expand हेतिला then trade and commerce भी grow करूथिला अर्बन सेंटर्स डेवलपमेंट भी होतिला ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन इंटरनल ट्रेड चलतिला से टाइम रे ओवरसीज ट्रेड सी ट्रेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रे पेपर मेकिंग टेक्नोलॉजी स्पिनिंग व्हील इंप्रूवमेंट ऑफ वीविंग टेक्निक्स ग्रोथ ऑफ सेरिकल्चर इंक्रीज्ड यूज ऑफ ब्रिक मोटर एगुड़ी सब इंपोर्टेंट इनोवेशन थिला से टाइम रे एजुकेशन रे मक्तब माने होची एलिमेंटरी स्कूल जोटी की छुआ माने कोन करथले रीडिंग और राइटिंग सिखुथले मद्रासा होची इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर लर्निंग सुफिज्म गोटे मिस्टिकल ट्रेडिशन इस्लाम रो जेडा कि लव डिवोशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करे मेजर सूफी ऑर्डर्स जेमती सुसरावर्दी ऑर्डर मुल्तान बस एंड चिश्ती ऑर्डर दिल्ली रो इंपोर्टेंट सेंट किए नजामुद्दीन औलिया Sufism played a major role in spreading ideas of tolerance and spiritual devotion. Caste and women रे caste system largely continue करूतला से टाइम रे भी सल्तनत पीरियड रे भी most traditional social practices से टाइम रे भी unchanged थिला किछि चेंज हे नतला सेतरे women मानकर पोजीशन बहुत खराब थिला पुर्दा एंड से माने अलगा क्वार्टर रे रहउतले जाको जनाना कहउतले had rights
to inheritance and divorce. Hindu women mane generally fewer legal right enjoy କରୁଥିଲେ than Muslim women. This is very important. ଯଦି ଏଟା reverse କରି ପଚାରିଥିବ ଏଟା ମନେ ରଖିବ କି ହିନ୍ଦୁ women ମାନଙ୍କ ପାଖରେ fewer legal right ଥିଲା, ମୁସଲିମ women ଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକା ଥିଲା. Evolution of syncretic culture ର ମାନେ ହେଉଛି interaction between India and Islamic traditions led to the development of composite or syncretic culture. Architecture ନୂଆ feature introduce ହେଇଥିଲା, arch, dome, vault, lime mortar ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ introduce ହେଇଥିଲା. एगुड़ा थिला नुआ फीचर. इंपोर्टेंट मॉन्यूमेंट मन रखिबो कुवात उल इस्लाम मॉस्क, अधाई दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, तुगलकाबाद फोर्ट, हौज खास. म्यूजिक एंड डांस कंट्रीब्यूशन ए इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रबाब, सारंगी. लिटरेचर अमित खुसराओ से जने ग्रेट लिटरेरी फिगर थिले सल्तनत पीरियड रो, तांकर इंपोर्टेंट वर्क्स, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. मिफ्ता उल फतूह, खाजाइन उल फतूह, देन तुगलकनामा, नू सिफर. He praised Indian culture, language, music, and traditions. Take 5 minutes break.
Cholas. Origin of the dynasty. Later Chola dynasty, it was found by Vijayalaya Chola around 850 CE. से थंजावुर को कैप्चर करथिले एंड तांकर कैपिटल सेटा से बनैथिले. Chola gradually expanded their power across South India. Important rulers in the Vijayalaya Aditya first, Parantaka first, Rajendra first. Sources की Chola history mainly known from inscription and copper plates रो हमें जानिया पाई था. Temple inscriptions भी details provide करंती about administration, society and economy. Literary works such as the Kalinga Puttaparani and the Muvarula also provide the information. Foreign accounts and temple records are additional sources. Territory. Chola kingdom originally centered around the Kaveri delta. Expand hitla to over most of the Tamil Nadu. ताको peak time रे empire श्रीलंका, केरला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका को भी include करुतला parts of them. Chola also exercised influence over the Southeast Asian regions. Raja Chola, greatest Chola ruler थिले, से Chola को transform करथिले into powerful empire. He conquered parts of Sri Lanka, Kerala and Maldives. से Chola navy को strengthen करथिले and promote करथिले overseas trade को. He introduced efficient and land revenue administration. Brihadeshwara temple, Raja first Brihadeshwara temple built करथिले at Thanjavur. Temple is dedicated to Lord Shiva. It is one of the finest examples of Chola architecture. It reflects the wealth and power of the Chola empire. Rajendra first son and successor thile Raja first kara. He expanded the empire to its greatest extent. से पाल ruler को defeat करिथिले जहां का नाम था महिपाल in North India. He conducted successful naval expeditions to Southeast Asia. His reign marked the peak of the Chola power. Gangaikonda Cholapuram. Rajendra first, he founded the Gangaikonda Cholapuram as his capital. City commemorated his northern victories. Gote Shiva temple, gote magnificent Shiva temple sei time re city built heitla. It became important political and cultural center. Naval achievements re jodi ame dekhiba Chola developed one of the strongest navies in India. Se important maritime trade routes को control करुଥିଲେ. Influence extended to Sri Vijaya and other Southeast Asian regions. Naval strength help କରିଥିଲା increase କରିବାରେ trade and political prestige. Chola administration रे king supreme authority ଥିଲେ in the Chola state. He controlled administration, army and justice. Provinces divide ହେଇଥିଲା मंडलम्स रे. मंडलम्स को empire divide ହେଇଥିଲା मंडलम्स रे. Sorry, मंडलम्स काहू कहउतले provinces को. Then मंडलम्स divide ହେଇଥିଲା Valanadus रे. Then Valanadu divide ହେଇଥିଲା into nadus and villages. And a system थिला जोड़ा carry out सेई time रे होतला. It ensured efficient administration. Chola army, it consisted of infantry, cavalry and elephants. Se gote powerful navy भी maintain करके रखुतले. Military regiments, they were often named after kings. Army territorial expansion and defense रे help करुतला. Local administration गोटे advanced system of local self government से time रे चलथिला. Village assemblies major role play करुतले administration रे. Local bodies से taxation, irrigation and public works manage करुतले. Ur was the assembly of ordinary villages. Local administration and public welfare से मैंने handle करुतले. Revenue collection and maintenance activities को भी से मैंने supervise करुतले. सभा बा सभा होची ब्रह्मदेव villages रो assembly. It managed land grants, temples and irrigation works. It exercised administrative and judicial powers. Nagaram hochi assembly of merchants. Nattar semti hochi assembly of the Nadu level at the Nadu level. Uttaramerur system. Uttaramerur inscriptions provide detail about the village administration. Committee रो जो member माने थिले सेमानंकु select करा जाउतला through the कुडाफोलाई system. Eligible person मानंकु choose करा जाउतला by drawing the lots and ए जो system थिला से local participation को encourage करुतला in governance.
आफ्टर चोल पंड्यास आमे पढ़िबा पंड्यास थिले वन ऑफ द थ्री मेजर तमिल डायनेस्टी तांको कैपिटल मदुराई रे थिला से माने गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करूथिले पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री रे डायनेस्टी रिवाइव्ड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द कालाभ्रास सोर्स आमे देखिए को पाई थाउ तांको विषय जो इन्फॉर्मेशन रहला संगम लिटरेचर रो इंस्क्रिप्शन एंड कॉपर प्लेट्स फॉरेन ट्रैवलर सच एज मार्को पोलो सीए भी पंड्या किंगडम को डिस्क्राइब करिसंती टेंपल इंस्क्रिप्शन तमिल लिटरेरी वर्क्स ए सब होची सोर्स टेरिटोरी पंड्या किंगडम वाज नोन एज द पंड्या मंडलम से सदर्न तमिलनाडु को कवर करी थिले वेस्टर्न घाट्स फॉर्म्ड इट्स वेस्टर्न बाउंड्री और बे ऑफ बंगाल ताकर ईस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करूथला देन पंड्या रिवाइवल कादुनगन काडुनगन is regarded as the founder of the revived Pandya kingdom. See Kalabhras को defeat करिथिले and restored the Pandya rule. He laid the foundation of the later growth of the dynasty. मरावर्मन अवानी सुलेमानी से पंड्या किंगडम को आहुरी स्ट्रेंथन करथिले. His reign helped consolidate the Pandya authority. Arikesari Mahavarman Nedumaran, he was the important early Pandya ruler and tradition associated him with the conversion to Shaivism. He fought against the Pallavas and other other rivals. Kochadian Ranadhira, he expanded the Pandya influence through military campaigns. Jotila Parantaka Nedun Jadayan, he was one of the most notable early Pandya rulers. Several neighboring rulers को defeat करिथिले important inscriptions रे एडा से issue करिथिले. Rise of Pandya again. Decline of Cholas created opportunity for Pandya expansion. Pandyas emerged as leading power in South India and तांकर जो empire थिला it reached its peak or zenith during the 13th century. Madurai गोटे prosperous political and commercial center हेतला से time रे. Jatavarman Sundara Pandyan, he was the great ruler. Se Cholas manu defeat करिथिले and reduced them to subordinate status. He extended the Pandya influence into Sri Lanka. Pandya kingdom, he made the Pandya kingdom dominant power in South India. Mahavarman Kulasekara Pandyan, se Sundara Pandyan को succeed करिथिले and maintained the strength of the kingdom. से peace and prosperity witness करथिले तांका रियाइन टाइम रे फॉरेन ट्रेड फ्लोरिश करथिला तांका टाइम रे इन्वेशन ऑफ मलिक कफूर 1311 सीई मलिक कफूर पंड्या किंगडम को इन्वेड करथिले ड्यूरिंग द रियाइन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी मदुराई एंड सेवरल टेंपल्स को प्लंडर करथिले एंड इन्वेजन को वीक करथिले इन्वेजन वीकेंड द पंड्या किंगडम द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स फर्दर एक्सेलरेटेड इट्स डिक्लाइन तापरे कोन हला पंड्यास माने तांकर पावर loss hela after the invasion. Madurai later came under the Delhi Sultanate and जो independent Pandya kingdom thila it gradually disappeared. State capital Madurai thila Pandya kingdom ra capital important political cultural and commercial center thila सेटा गोटे royal officials माने जो king थिले तांको group of officials assist करथिले ministers माने थिले administration of revenue collection को supervise करिया को military officers से माने भी गोटे important role play करथिले political division जदि हम देखिबा kingdom was divided into administrative units then villages form the basic unit of administration and religion Pandyas माने हिंदू religious institution को patronize करथिले temples land grants and donation receive करथिला से टाइम रे तमिल and sanskrit inscriptions रे यूज होतिला religion played important role agriculture foundation थिला पंड्या इकोनॉमी रो irrigation local farming also trade जेमति कि ट्रेड से टाइम रे फ्लोरिश करथला अरब ट्रेडर माने तमिल कोस्ट रे सेटल हेतिले हॉर्स ट्रेड माने हॉर्सेस को इंपोर्ट करी आना जाउतला फ्रॉम वेस्ट एशिया हॉर्सेस ट्रेड वाज एन इंपोर्टेंट कमर्शियल एक्टिविटी इंपोर्टेड हॉर्सेस वेर यूज्ड इन आर्मी कोन पई के इंपोर्ट करी आना जिवो आर्मी पई कि इरिगेशन रे पंड्यास माने से माने टैंक्स और कैनल्स कंस्ट्रक्ट करूथिले एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पई कि जोटा कि इरिगेशन ता थ्रू इरिगेशन बढ़ुथिला एंड इट इंप्रूव्ड द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी local communities participated in the maintenance work तमिल लिटरेचर को सेही टाइम रे रॉयल पैट्रोनेज मिलथिला रिलीजन जदि हमें देखिबा से माने हिंदू ओके शैविज्म yes Pandyas expanded many existing temple architecture develop hitla सी टाइम रे
तापर आमे पढ़िबा बाहामानी एंड विजयनगर किंगडम्स। डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सुल्तानेट लेड टू इमर्जेंस ऑफ टू पावरफुल किंगडम्स इन साउथ इंडिया। गोटे होची बाहामानी किंगडम आ गोटे होची विजयनगर एम्पायर। मोहम्मद बिन तुगलक टाइम रे बहुत गुड़े सदर्न टेरिटोरीज से दिल्ली अगेंस्ट रिवोल्ट करथिले। बाहामानी किंगडम 1347 रे एस्टैब्लिश हेतिला बाय अलाउद्दीन हसन बहमन शाह एंड विजयनगर एम्पायर फाउंडेड इन 1336 बाय द संगम ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का। दीटा जाक किंगडम से कंट्रोल compete करुले ओवर द डेक्कन फॉर नियरली 2 centuries। सोर्सेस हमको मिली पर्शियन क्रॉनिकल इंस्क्रिप्शन कॉपर प्लेट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर का अकाउंट्स रु। इंपोर्टेंट ट्रैवलर्स जो से टाइम रे आसीथिले इबन बतूता, अब्दुल रजाक एंड डोमिंगो पाइस। बाहामानी किंगडम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह 1347 रू 1358 से बाहामानी किंगडम रा फाउंडर थिले एंड ही फाउंडेड द किंगडम इन 1347। किंगडम एक्सटेंडेड बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर्स। गुलबर्गा became the first capital। गुलबर्गा फर्स्ट कैपिटल थिला। तापरे कोन हला ही ऑर्गेनाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द मॉडल ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये विजयनगर और वरंगल सहित फ्रीक्वेंटली फाइट करुथले। मोहम्मद फर्स्ट किंगडम को स्ट्रेंथन करथिले आफ्टर हसन बहमन शाह। से एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस को रिऑर्गेनाइज करथिले एंड इंप्रूव करथिले। वार एबे भी चलीथिला तांकर विजयनगर अगेंस्ट रे। तांकर आइन टाइम रे बाहामानी स्टेट बहुत ही स्टेबल आउ पावरफुल हिसाब रे इमर्ज करथिला। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जदि हमें देखिबा मोहम्मद फर्स्ट से गवर्नमेंट को 8टा इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट रे डिवाइड करथिले। वकील उस सल्तनत प्राइम मिनिस्टर, वजीर ई कुल फाइनेंस मिनिस्टर को कहते, अमीर ई जुमला रेवेन्यू मिनिस्टर को कहते, वजीर ई अशरफ फॉरेन अफेयर्स, नाजिर फाइनेंस ऑडिटर, पेशवा असिस्टेंट मिनिस्टर, कोटवाल चीफ ऑफ पुलिस, सदर ई जहान चीफ जस्टिस। कैपिटल को गुलबर्गा रु बिदार को निया गला 1429 रे। मोहम्मद गवन गोटे फेमस बाहामानी मिनिस्टर थिले। से जने स्कॉलर एडमिनिस्ट्रेटर और मिलिटरी लीडर थिले एंड ही फाउंडेड द फेमस मद्रासा एट बिरार। से किंगडम को 8टा प्रोविंसेस रे रिऑर्गेनाइज करथिले फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। गोलकोंडा फोर्ट मेजर इंपोर्टेंट फोर्ट थिला बाहामानी पीरियड रो। लेटर बिकेम द कैपिटल ऑफ द कुतुब शाही रूलर्स। फोर्ट टा फेमस थिला तार स्ट्रांग डिफेंसिव फीचर्स पई। औरंगजेब से ताको 1687 रे कैप्चर करके नै गले। आर्ट एंड आर्किटेक्चर रे बाहामानीज हमें देखिबा कि बहुत गुडे मॉस्क, मद्रासा, फोर्ट और पैलेसेस से माने बिल्ड करथिले। ही डेवलप्ड इनटू इंडो सारासेनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इंपोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स जेमति कि जामा मस्जिद, गोलकोंडा फोर्ट, चांद मीनार, गोल गुंबाज। डिक्लाइन ऑफ बाहामानी किंगडम मोहम्मद थर्ड को डेथ परे वीक रूलर्स पावर को आसिले। कॉन्फ्लिक्ट्स हैला। बाहामानी स्टेट ग्रेजुअली 5टा इंडिपेंडेंट किंगडम्स रे भांगी गला। बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, गोलकोंडा, बिदार एंड ए जो स्टेट गुडी को दे आर नोन एज द डेक्कन सल्तनट्स। बैटल ऑफ तालिकोटा जोटा कि 1565 रे हेतिला। डेक्कन सल्तनट्स एथिरे कोन हेतिले से विजयनगर अगेंस्ट रे यूनिफाई हेले। विजयनगर को डिफीट करा गला इन द बैटल ऑफ तालिकोटा राक्षसी तंगाड़ी। द बैटल मार्क द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर पावर। तापरे कोन हला दिल्ली सल्तनत माने से माने ग्रेजुअली मुगल एम्पायर को अब्सॉर्ब हे गले। Vijayanagar Empire was founded in 1336 CE by the Sangam brothers Harihara and the Bukka. Former officers under the Kakatiyas and later served as the Hoysalas. Capital को establish करा जायतला विजयनगर बा हम्पी रे on the bank of the Tungabhadra river. Empire emerged as decline of Delhi Sultanate. Emerged after decline of Delhi Sultanate authority in South India. Vijayanagara rulers gradually expanded their control over most South India. Dynasties of Vijayanagar. जेमती संगव, सलुव, तुलुव एंड आराविडो। विजयनगर बाहामानी कॉन्फ्लिक्ट जो फर्टाइल रायचूर दोआब को नेकी जोटा कि कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर भितर थिला मझिरे थिला। इट वाज द मेन कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। बोथ किंगडम्स कंपीटेड फॉर कंट्रोल ऑफ पोर्ट, ट्रेड रूट एंड स्ट्रेटेजिक फोर्स। वार कंटिन्यू चली थिला फ्रीक्वेंटली किंतु ईदर साइड दे अचीव्ड परमानेंट डोमिनेंस। कॉन्फ्लिक्ट 2 centuries कंटिन्यू कला। देवराय फर्स्ट से आर्मी एंड स्ट्रेंथन करथिले, इंप्रूव करथिले इरिगेशन फैसिलिटीज, टैंक्स एंड कैनल्स को रिपेयर करथिले। बाहामानी अटैक्स ही सक्सेसफुली रेजिस्टेड द बाहामानी अटैक्स। हिज रियाइन एनहांस्ड द प्रेस्टीज ऑफ विजयनगर। देवराय सेकंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थिले। एम्पायर को एक्सपांड करिया सहित एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करथिले।
स्किल्ड मुस्लिम आर्चर्स मानक से रिक्रुट करथिले एंड कैवलरी को रिक्रुट करथिले इन द आर्मी. Foreign traveler described Vijayanagar as a rich and prosperous kingdom during his reign. Saluva dynasty, Sangama dynasty weak ହେଇଥିଲା due to succession disputes. सलुवा नरसिंह से पावर को से टाइम रे सीज करके फाउंड कले सलुवा डायनास्टी. ही रिस्टोर्ड द स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्टेड द एम्पायर फ्रॉम एनिमीज. किंतु डायनास्टी गोटे शॉर्ट पीरियड पे ही चलिला. तुलुवा डायनास्टी कृष्णदेवराय ग्रेटेस्ट रूलर थिले विजयनगर एम्पायर रो. सी बहमनीज गजपति एंड बाकी जो राइवल्स माने थिले तांको डिफीट करथिले. रायचूर दोआब विजयनगर कंट्रोल अंडर रे आनिथिले. हिज रियाइन इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ विजयनगर. मने रखिबो. Trade, agriculture, literature, architecture flourished under him. He wrote the Telugu work Amutka Malyada. The Ashta-Diggajas. Krishnadevaraya 8 famous Telugu scholars जो मानको Ashta-Diggajas कहउतले तांको पैट्रोनाइज करूथिले. इंपोर्टेंट तांको भितरु थिले अलासनी पेदन, नंदी थिमन, धूरजती, तेनाली रामकृष्ण. बैटल ऑफ तालिकोटा तो हमें देखिले. कंबाइंड फोर्स ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बिदार से विजयनगर अगेंस्ट फाइट कले. विजयनगर को डिफीट कले इन द बैटल ऑफ तालिकोटा. अलिया रामराय वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड. हम्पी को प्लंडर करा गला एंड डिस्ट्रॉय करा गला. बैटल मार्क द बिगिनिंग ऑफ द विजयनगर's डिक्लाइन. एडमिनिस्ट्रेशन ने किंग थिले सुप्रीम अथॉरिटी. चीफ मिनिस्टर को महा प्रधानी कहा जाउतिला. प्रोविंसेस एम्पायर डिवाइड हेतिला. प्रोविंसेस जो कहता राज्यस. नयनकर सिस्टम लैंड असाइनमेंट ग्रांट होतला मिलिटरी चीफ्स मानकु जो को नायकस बोली कहा जाउतला. नायकस से माने ट्रूप्स मेंटेन करूतले एंड दे प्रोवाइडेड मिलिटरी सर्विस टू द किंग. इन रिटर्न तांकु से माने कंट्रोल एंजॉय करूतले ओवर द असाइन्ड टेरिटरीज. The system helped strengthen the army and administration. Society and economy. Society को traditional caste lines रे organize करा जाइतिला. ब्राह्मण्स माने high social status maintain करथिले. agriculture main occupation थिला. urban centers भी से टाइम रे grow करूथिला. economy रे agriculture थिला backbone. irrigation को develop करा जाइतिला through tanks, canals and reservoirs. trade flourish करूथिला. major exports भी से टाइम रे होतला. spices, textiles, excuse me, rice and precious stones रो. हॉर्सेस इंपोर्ट करा जाउतला फ्रॉम अरेबिया एंड पर्शिया. लिटरेचर विजयनगर रूलर्स से माने संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ एंड तमिल लिटरेचर को पैट्रोनाइज करूतले. कृष्णदेवराय जने स्कॉलर थिले, राइटर थिले. तेलुगु लिटरेचर इट रीच्ड इट्स गोल्डन एज ड्यूरिंग हिज रियाइन. स्कॉलर्स रिसीव्ड ग्रांट्स एंड रॉयल सपोर्ट. विजयनगर रूलर्स से मैग्निफिसेंट टेंपल, मंडपस, टैंक्स एंड पैलेसेस बिल्ड करथिले. आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल साउथ इंडियन स्टाइल सहित कंबाइन करा जाउतला से टाइम रे विथ न्यू फीचर्स. टेम्पल्स आर रिचली डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर्स. इंपोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स जेमति कि विरूपाक्षा टेम्पल, विट्ठल स्वामी टेम्पल, हजारा टेम्पल, कृष्णा टेम्पल. भक्ति मूवमेंट इन इंडिया. India witnessed the interaction of Vedic, Jain, Buddhist and Islamic tradition. Bhakti movement personal devotion ऊपर emphasize करथिला to God rather than rituals. से religion को simple करिथिला and accessible to common people. Bhakti saint माने regional language use करुथिले to spread their message. Movement social harmony को promote करथिला and spiritual equality को promote करथिला. Bhakti movement in the south देखिए. Bhakti movement first South India रे से momentum gain कला. It emerged as response to growing influence of Jainism and Buddhism. Conflict थिला तार Buddhism and Jainism सहित. Shaivism और Vaishnavism से compete करुथिले Buddhism and Jainism सहित for royal patronage. Bhakti saint माने religious practices को criticize करुथिले of rival faiths. Gradually Buddhism decline कला South India रे और बहुत गुडे followers से माने Shaivism and Vaishnavism को adopt करिनेले. Early conflicts. Religious conflicts were common during the Pallava period. Appara, Sambandar and other saints defended the Shaivism. Bhakti literature often reflected this religious debate. Over time, Bhakti tradition dominant ହେଇଗଲା Tamil Nadu रे. Spread of Bhakti movement to North India.
जो साउथ इंडियन भक्ति सेंट्स थिले तांकर जो टीचिंग थिला से धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया को स्प्रेड हवा को लागिला फिलोसोफर सच एज द रामानुज से कौन करथिले ही इन्फ्लुएंस्ड दिस स्प्रेड भक्ति स्ट्रेस डिवोशन ओवर कास्ट रिचुअल एंड प्रिस्टली अथॉरिटी इम्पैक्ट एटा आसला कि भक्ति कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज कला encouraged equality strengthened the regional languages and literature brought religion closer to ordinary people Sufism impact कौन था Sufism it represents the mystical tradition of Islam Sufism love devotion direct experience of God ऊपर emphasize करे they preached simplicity tolerance and brotherhood Sufi saint माने Sufi saints attracted followers from different communities major Sufi order जदि हमें देखिबा गोटे अछि चिश्ती then सुहरावर्दी then कादेरी सुफिज्म रो इन्फ्लुएंस थिला एया कि से हार्मनी एनकरेज करितला हिंदू एंड मुस्लिम को भितरे इट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ भक्ति आइडियाज इन नॉर्थ इंडिया सूफी सेंटर्स बिकेम इंपोर्टेंट स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस तांकर जो टीचिंग थिला सोशल एंड कल्चरल इंटीग्रेशन को प्रमोट कला salient features belief in one supreme god personal devotion empty ritual rejection of ceremonies rejection then caste discrimination opposition stress on equality and universal brotherhood importance of guru as spiritual guide use of local language for religious teachings proponents of bhakti कबीर कबीर जने ग्रेट भक्ति साइंट थिले नॉर्थ इंडिया रो से हिंदू एंड मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी को क्रिटिसाइज करथिले आइडल वर्शिप को रिजेक्ट करथिले एंड ही प्रीच्ड डिवोशन टू वन गॉड एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड हिज टीचिंग्स आर प्रिजर्व्ड इन द बिजक रविदास जने सोशली डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी रो बिलोंग करूथिले ही प्रीच्ड इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी अपोज्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हिज टीचिंग्स इन्फ्लुएंस्ड द लेटर भक्ति ट्रेडिशन सेमती गुरु नानक से सिखिज्म रा फाउंडर थिले he preached devotion of one god तांका टीचिंग को लेटर गुरु ग्रंथ साहिब रे कंपाइल करा जायछि चैतन्य जन इंपोर्टेंट वैष्णव सेंट थिले से कृष्ण को डिवोशन को प्रमोट करथिले ही एम्फसाइज सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स हिज मूवमेंट बिकम वेरी पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया नामदेव जने सेंट थिले फ्रॉम महाराष्ट्र से भक्ति रो मैसेज को स्प्रेड करथिले थ्रू डिवोशनल सॉन्ग्स ही एम्फसाइज लव एंड डिवोशन hymns include influenced later saints रामानंद से वैष्णविज्म को पॉपुलराइज करथिले इन नॉर्थ इंडिया ही एक्सेप्टेड डिसिपल्स फ्रॉम ऑल कास्ट तांकर एम्फसाइज थिला कि केमिति राम को डिवोशन दिए ही एम्फसाइज डिवोशन टू राम कबीर इज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड वन ऑफ हिज डिसिपल्स मीराबाई जने फेमस डिवोटी थिले कृष्णकर से न्यूमरस डिवोशनल सॉन्ग्स कंपोज करथिले तांकर भजन पॉपुलर थिला थ्रू आउट इंडिया ही सिंबलाइज्ड कंप्लीट डिवोशन टू गॉड सूरदास वाज अ ग्रेट कृष्ण डिवोटी ही कंपोज्ड डिवोशनल पोएट्री इन हिंदी हिज वर्क्स डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ कृष्णा ही कंट्रीब्यूटेड greatly to bhakti literature tukaram he belonged to maharashtra he was devotee of vithoba he preached devotion equality and moral living तांकर जो अभंग थिला दे बिकेम वेरी पॉपुलर इम्पैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट रो इम्पैक्ट हमें ऑलरेडी देखि सारलेनी सो इट मेड रिलीजन सिंपल एक्सेसिबल कास्ट बैरियर को वीकेन करथिला रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करथिला सोशल इक्वालिटी रिलीजियस टॉलरेंस ए सब प्रमोट हेतिला ग्रोथ ऑफ लिटरेचर म्यूजिक एंड डिवोशनल ट्रेडिशंस को कंट्रीब्यूट करथिला हेल्प क्रिएट अ शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज अक्रॉस इंडिया टेक 5 minutes break
मुगल एम्पायर फाउंडर के थिले बाबर थिले जे कि फाउंड करथिले मुगल एम्पायर 1526 रे आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। मुगल एस्टाब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रलाइज्ड एम्पायर इन इंडिया। मेजर मुगल रूलर्स जे थिले से थिले बाबर, हुमायून, अकबर, जहांगीर, शाहजहां आउ औरंगजेब। मुगल पीरियड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड कल्चरल ग्रोथ आउ आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स विटनेस करथिला। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1526 टू 1530। बाबर तिमूर कर डिसेंडेंट थिले ऑन हिज फादर साइड एंड चंगेज खान ऑन हिज मदर साइड। से काबुल को कैप्चर करथिले एंड लेटर टर्न टुवर्ड्स इंडिया। दौलत खान लोधी और राणा संघा से तांको इनवाइट करथिले टू इंटरवेन इन द इंडियन पॉलिटिक्स। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जोटा 1526 रे हेतला सेतरे बाबर इब्राहिम लोधी को पानीपत रे डिफीट करथिले। बैटल ऑफ खानवा 1527 रे हेला बाबर सेतरे राणा संघा और जो मेवार रथिले तांको डिफीट करथिले। बैटल ऑफ चंदेरी 1528 रे बाबर डिफीट करथिले मेदिनी राय ऑफ मालवा को। बैटल ऑफ घाघरा 1529 एतरे बाबर डिफीट करथिले अफगान चीफ्स मानको। एस्टिमेट ऑफ बाबर जदि आमे टिके ओवरऑली देखिबा से जने ब्रेव सोल्जर थिले, कैपेबल कमांडर थिले। तांकर जो ऑटोबायोग्राफी तुजुक ई बाबरी बा बाबरनामा गोटे इंपोर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स। एंड बाबर तांकर डेथ केबे हेतला 1530 रे हेतला एंड ही वाज सक्सीडेड बाय हुमायून। हुमायून से स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फेस करथिले अफगान चीफ्स मानक ठारू और ताको निज भाई मानक ठारू भी। शेर शाह सूरी वाज हिज स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल। बैटल ऑफ चौसा हेतला 1539 रे जोतर कि हुमायून शेर शाह को डिफीट करथिले। बैटल ऑफ कनौज बा बिलग्राम जोटा कि 1540 रे हेतला सेतरे शेर शाह हे अगेन डिफीट कले हुमायून को। हुमायून तांकर एम्पायर को लॉस्ट करथिले एंड ही फ्लेड टू पर्शिया। तापर से आसिले जेमती पर्शियन को सपोर्ट को नेकी हुमायून ही रिगेन दिल्ली इन 1555 एंड तांकर 1556 रे डेथ हे जाइतिला। शेर शाह सूरी एंड द सूर डायनास्टी। शेर शाह सूरी जने एफिशिएंट रूलर एंड एडमिनिस्ट्रेटर थिले। से हुमायून को डिफीट करथिले एंड डिस्प्लेस करथिले एंड फाउंडेड द सूर एम्पायर। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स से देखिबा से एफिशिएंट लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस करथिले। लैंड को मेजर करथिले फॉर फेयर टैक्स असेसमेंट। इम्प्रूव रोड्स एंड कम्युनिकेशन। ग्रैंड ट्रंक रोड से टाइम रे रिपेयर हेतला एंड एक्सटेंड हेतला एंड ही बिल्ट सराइज रेस्ट हाउसेस फॉर ट्रैवलर्स। करेंसी से इंट्रोड्यूस करथिले सिल्वर रुपया। तांकर करेंसी सिस्टम लेटर मुगल कॉइनेज को इन्फ्लुएंस कला। शेर शाह से 1545 रे तांकर डेथ हे गला। जागीरदारी सिस्टम जागीर होची गोटे लैंड असाइनमेंट जोटा कि ऑफिशियल्स मानको दिया जाउतला इन प्लेस ऑफ देयर सैलरी। जमींदारी सिस्टम जमींदार से माने कोन करले लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करले पीजन मानको ठारू एंड दे एक्टेड एज इंटरमीडिएरीज बिटवीन द स्टेट एंड द कल्टीवेटर्स। हुमायून का रिटर्न जेतबळे हेला एक्साइल रो शेर शाह सक्सेसर सेतबळ को वीक हे जाइतले एंड हुमायून आमे देखिले तो दिल्ली को कैप्चर करथिले। Emperor Akbar, second battle of Panipat 1556 रे Akbar forces they defeated Hemu. Mughal rule formally re-established हेतला। बैराम खान से अकबर का regent हिसाब रे सर्व करले during his early years. He helped consolidate the Mughal authority. Military conquest अकबर मालवा, गुजरात, बंगाल, कश्मीर, सिंध और पार्ट ऑफ डेक्कन कनकर करथिले। से मुगल एम्पायर को ग्रेटली एक्सपैंड करथिले। राजपूत पॉलिसी से जोड़ा फॉलो करुथिले it was the policy of friendship with Rajputs. से matrimonial alliances रे enter करथिले with Rajput families. मनसबदारी सिस्टम अकबर इंट्रोड्यूस करथिले। मनसब्स होचंदी दे आर रैंक्ड ऑफिशियल्स जो माने कि मिलिटरी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रे पोस्टेड थिले। रैंक डिटरमाइन सैलरी एंड मिलिटरी रिस्पांसिबिलिटीज। रिलीजियस पॉलिसी जोड़ा हमें देखिबा कि रिलीजियस टॉलरेंस फॉलो करुथिले। जिजिया और पिलग्रिमेज टैक्स को अकबर अबॉलिश करथिले। इबादत खाना established at Fatehpur Sikri in 1575. Scholars of different faith से religious issue को 80 debate करुथिले। दीनी इलाही एटा को इंट्रोड्यूस करा जायतिला 1582 रे। It aimed to promote ethical values and harmony. जहांगीर अकबर का पुओ थिले। He has interest in art and justice. अकबर का पॉलिसी को से कंटिन्यू करिथिले। फेमस चेन ऑफ जस्टिस इशू करिथिले। एनकरेज पेंटिंग एंड लिटरेचर। इंग्लिश ट्रैवलर सर थॉमस रो तांका टाइम रे कोर्ट को विजिट करथिले। दिस पेव्ड द वे फॉर इंग्लिश ट्रेड इन इंडिया। शाहजहां का रियाइन ताको कुहा जाए गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। ही एक्सपैंडेड मुगल इन्फ्लुएंस इन द डेक्कन।
आर्किटेक्चरल अचीवमेंट जदि आमे देखिबे से ताजमहल बिल्ड करथिले, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, डेक्कन पॉलिसी ही कंडक्टेड कैंपेन्स अगेंस्ट अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा, यूरोपियन ट्रेडिंग सेटलमेंट जेमति कि पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच से टाइम रे से माने कोन करथिले सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश करथिले। ताजमहल इट वाज बिल्ड बाय शाहजहां इन मेमोरी ऑफ मुमताज महल, आगरा रे अछि एटा, constructed using white marble, considered masterpiece of Mughal architecture। औरंगजेब लास्ट पावरफुल रूलर थिले, से एम्पायर को एक्सपांड करथिले टू ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। जिजिया को इम्पोज पुर से आउथरे करथिले, मोर ऑर्थोडॉक्स थिले ताको इस्लामिक पॉलिसीज को नेकरी। डेक्कन कैंपेन रे जदि हमें देखिबा से चार से लॉन्ग वॉर्स फाइट करथिले अगेंस्ट द बीजापुर एंड गोलकोंडा एंड दीटा जाक किंगडम को से एनेक्स कर नेथिले। कॉन्फ्लिक्ट विथ मराठास, स्ट्रांग रेजिस्टेंस तांको मिलिथिला मराठास को तरफरु। लॉन्ग डेक्कन वॉर्स वीकेंड द मुगल रिसोर्सेस, तांकर 1707 रे डेथ हे जाइतला एंड आफ्टर हिज डेथ मुगल एम्पायर ग्रेजुअली डिक्लाइंड। मद्रासा से टाइम रे भी कंटिन्यू चलीथिला टू टीच मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। संस्कृत वर्क्स on medicine and mathematics was translated into Persian. Water lifting devices such as Persian wheel improved irrigation. Shipbuilding technology improved. Larger ships were constructed. Firearms, gunpowder became increasingly important. Architecture, Mughal architecture, Indian, Persian और Central Asian style को combine करे. Buildings were constructed using red sandstone and white marble. Large domes, arcs, minarets, decorative carvings became common. Important monument जेमती हुमायूंस टॉम्ब, फर्स्ट मेजर मुगल गार्डन टॉम्ब एटा। बुलंद दरवाजा होची बिल्ट बाय अकबर एट फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी अकबर planned capital city. Red Fort built by Shah Jahan in Delhi. Taj Mahal built by Shah Jahan. Jama Masjid one of the largest mosques in India. Garden Jahangir और शाहजहां से ब्यूटीफुल गार्डन्स को प्रमोट करुथिले। शालीमार गार्डन होची गोटे फेमस एग्जांपल। पेंटिंग मुगल रूलर्स मिनिएचर पेंटिंग को पैट्रोनाइज करुथिले। पर्शियन एंड इंडियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन एथरे टुगेदर ब्लेंड होउतला। Akbar encouraged illustration of historical and literary works. Jahangir particularly encouraged portrait painting and nature studies. Famous painter किए थिले दसवंत and बसवन। म्यूजिक एंड डांस म्यूजिक फ्लोरिश करुथला मुगल पैट्रोनेज अंडर तानसेन वन ऑफ नवरत्न थिले अकबर कर जने रिनाउंड म्यूजिशियन थिले। क्लासिकल इंडियन म्यूजिक रॉयल सपोर्ट पाउथिला। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ वोकल ट्रेडिशन डेवलप्ड फर्दर। Persian literature, Persian was the official language of the Mughal court. Abul Fazl wrote the Akbarnama, Aini Akbari. Translation project Akbar encouraged translation of Sanskrit text into Persian. Mahabharata was translated as Razmnama. Several Hindu religions and philosophical works were translated also. Dara Shikho उपनिषद को ट्रांसलेट करथिले इनटू पर्शियन। डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज भी से टाइम रे होतला। उर्दू डेवलप्ड एज ए कॉमन लैंग्वेज थ्रू इंटरैक्शन विथ पर्शियन, अरबिक एंड लोकल लैंग्वेजेस। इंपोर्टेंट लिटरेरी फिगर्स से तुलसीदास से कौन करले रामचरितमानस। सूरदास डिवोशनल पोएट्री ऑफ कृष्णा। अब्दुल रहीम खान ई खनन हिंदी एंड पर्शियन पोएट्री। एकनाथ एंड तुकाराम मराठी भक्ति लिटरेचर। सिख लिटरेचर गुरु अर्जन देव से एक आदि ग्रंथ को कंपाइल करथिले जोटा कि गुरु ग्रंथ साहिब बोली भी कहा जाए एंड इट बिकेम द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म। आफ्टर 5 minutes we will start the Marathas.
The Marathas emerged as powerful force in western India under Shivaji. ସେମାନେ ମୁଗଲ ଅଥରିଟି କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ and established an independent kingdom. The rise weakened Mughal control in the Deccan. Marathas ସେମାନେ later ତାଙ୍କର influence କୁ expand କରିଥିଲେ under the leadership of the Peshwas. Cause of rise of Marathas. First, the physical feature and nature of the people. Konkan and Western Ghats रो जो difficult बा rugged terrain से तांको defense and guerrilla warfare को strengthen करिथिला. Marathas were hardy, courageous and accustomed to difficult conditions. Their knowledge of the hills helped them resist the powerful enemies. भक्ति मूवमेंट आउ तार इंपैक्ट आम एमि देखिया को पाइथाउ कि भक्ति मूवमेंट से गोटे सोशल यूनिटी क्रिएट करिथिला अमंग द मराठास. सेंट्स जेमति कि रामदास आउ एकनाथ हे गले से माने पीपल को इंस्पायर करिथिले थ्रू देयर टीचिंग्स. भक्ति लिटरेचर प्रमोटेड इक्वालिटी एंड डिवोशन. एक्सटर्नल कॉज जदि हमें देखिबा दिल्ली सल्तनत रो डिक्लाइन परे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हला. तो फ्रीक्वेंट वॉर्स भी से टाइम रे चलथला डेक्कन पावर्स को नेकी अमंग डेक्कन पावर्स वीकेंड देयर कंट्रोल. शिवाजी अंडर द मराठास से कोन करथिले फाउंडेशन ले करथिले ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट. शिवाजी जे कि 1629 रे तांकर बर्थ हेतिला एट द शिवनेरी फोर्ट. ही वाज द सन ऑफ द साजी भोंसले एंड जीजाबाई. दादाजी कोंडादेव सुपरवाइज हिज अर्ली ट्रेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. शिवाजी सेवरल फोर्ट कैप्चर करथिले इंक्लूडिंग तोरना, राजगढ़ एंड पुरंदर. से गोटे स्ट्रॉन्ग मिलिटरी बेस को बनैथिले एंड एक्सपैंडेड द मराठा टेरिटरी. हिज विक्ट्रीज इंक्रीज्ड हिज पॉपुलैरिटी अमंग द मराठास. शिवाजीज एंड बीजापुर शिवाजी राइज को गोटे थ्रेट हिसाब रे नैथिला. अफजल खान को पठा जाइतला शिवाजी को सरप्राइज करिया पई कि शिवाजी किंतु अफजल खान को मर्डर कर मार देथिले एंड डिफीटेड द बीजापुर फोर्सेस. शिवाजी एंड द मुगल्स. शिवाजी raided Surat in 1664 and acquired enormous wealth. जय सिंह तांको फोर्स करिथिले टू साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1665. शिवाजी आग्रा विजिट करथिले किंतु सेठु से एस्केप कर जाइथिले फ्रॉम मुगल कैप्टिविटी. ही लेटर रिकवर्ड फ्रॉम हिज lost territories. Conflict with Mughals 1670. Shivaji resumed attacks on Mughal territory. से तांकर फोर्स को रिगेन कले अंडर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर अंडर जोड़ा सरेंडर कर दिया जाइथिला. His power expanded rapidly in the Deccan. Coronation. Shivaji was crowned at Raigad in 6 June 1674. He assumed the title Chhatrapati. The coronation symbolized Maratha sovereignty. Deccan campaign. Shivaji expanded into southern India. He gained the territories in Karnataka and Tamil regions. These campaigns strengthened the Maratha kingdom. Last days, Shivaji died in 1680. By then, he had established a strong and independent Maratha state. मराठा एडमिनिस्ट्रेशन. सेंट्रल गवर्नमेंट शिवाजी कौन करथिले गोटे एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टैब्लिश करथिले कॉल्ड अष्टप्रधान. इट कंसिस्ट ऑफ 8 मिनिस्टर्स. सेतरे 8टा मिनिस्टर थिले जे कि किंग को असिस्ट करूथिले. मिनिस्टर्स वर रिस्पांसिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, जस्टिस, फॉरेन अफेयर्स एंड मिलिटरी मैटर्स. अष्टप्रधान रे पेशवा जिबे प्राइम मिनिस्टर एंड हेड ऑफ द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. अमत्य बा मजुमदार जे कि फाइनेंस मिनिस्टर थिले. सचिव चीफ सेक्रेटरी हु प्रिपेयर्ड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. मंत्री से इंटेलिजेंस एंड स्टेट रिकॉर्ड मेंटेन करूथिले. सेनापति कमांडर ऑफ आर्मी थिले. सुमंत बा दाबीर काहू को जाउतला फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को. देन पंडित राव रिलीजियस अफेयर्स एंड चैरिटीज. न्यायाधीश चीफ जस्टिस को कुआ जाउतला. प्रोविंशियल गवर्नमेंट. किंगडम को प्रोविंस रे डिवाइड करा जाइतला फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. प्रोविंसेस को पुनी फर्दर डिवाइड करा जाइतला डिस्ट्रिक्ट आउ डिस्ट्रिक्ट को विलेजेस रे. लोकल ऑफिशियल्स मान को अपॉइंट करा जाउतला रेवेन्यू कलेक्शन आउ लॉ एंड ऑर्डर को सुपरवाइज करिया को. रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन रे लैंड को केयरफुली मेजर करा जाउतला एंड असेस करा जाउतला. देन रेवेन्यू को जनरली फिक्स करा जाउतला अबाउट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस. फार्मर्स मान को लोन दिया जाउतला एंड असिस्टेंस दिया जाउतला ड्यूरिंग देयर डिफिकल्ट टाइम्स. चौथ एंड सरदेशमुखी रे चौथ होची टैक्स इक्वल टू 1/4 ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम नेबरिंग टेरिटरीज एंड सरदेशमुखी होची जो एडिशनल टैक्स कलेक्ट होथिला बाय मराठास एज हेरिडिटरी ओवरलॉर्ड्स. मिलिटरी ऑर्गेनाइजेशन आर्मी. शिवाजी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करथले. सोल्जर्स मान को कैश रे पेमेंट करा जाउतला. स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन थिला. कैवलरी होची स्ट्रॉन्गेस्ट विंग ऑफ द मराठा आर्मी.
कैवेलरी को फर्दर डिवाइड करा जाउतला बर्गिर्स बा स्टेट प्रोवाइडेड हॉर्सेस एंड द शिलादार्स ओन हॉर्सेस. Infant and artillery. Infantry played important role in guerrilla warfare of artillery comparatively less important thila cavalry ru. Naval re Shivaji gote powerful navy tanko pakhare thila. Naval bases established at Kolaba, Vijayadurg, Khanderi and Sindhudurg. Navy protected the western coast from foreign powers and pirates. रूल ऑफ पेशवाज. बालाजी विश्वनाथ से जने पेशवा थिले अंडर शाहू. से मराठा स्टेट को स्ट्रेंथन करिथिले एंड इंक्रीज द अथॉरिटी ऑफ द पेशवा. ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द मराठा एक्सपेंशन. बाजीराव फर्स्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मराठा जनरल थिले. से मराठा इन्फ्लुएंस को एक्सपांड करिथिले एंड तांकर फेमस मोटो थिला कि मुगल मानन को वीक करिबा एंड दैट द मुगल्स आर वीकनिंग एंड शुड बी चैलेंज कि ए जिंसर फायदाटा उठा जाऊ. बालाजी बाजीराव बा नाना साहेब मराठा पावर आंको टाइम रे पीक रे पहुंची थिला. मराठास एक्सपांडेड across much of India. His period ended with the third battle of Panipat जोटा कि 1761 रे हेतिला. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहा कहा भीतर हेतिला मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली को भीतर हेतिला. मराठास माने एथरे डिफीट हेतिले एंड बैटल चेक्ड मराठा एक्सपेंशन इन नॉर्थ इंडिया. माधवराव फर्स्ट से मराठा पावर को रिस्टोर करथिले आफ्टर पानीपत एंड रीऑर्गेनाइज करथिले एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी को. हिज रियाइन इज रिगार्डेड एज पीरियड ऑफ रिकवरी. एंग्लो मराठा वार जदि हमें देखिबा फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के बेतला 1775 रो नेकी 1782 जाके हितला. फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मराठास एंड जेतेबेले वार एंड हैला सेतेबेले गोटे ट्रीटी साइन हितला. सेटा होची ट्रीटी ऑफ सालबाई जोटा कि 1782 रे साइन हितला. सेतरे मराठास माने तांकर इंडिपेंडेंस को रिटेन करिथिले. सेकेंड एंग्लो मराठा वार रे इंटरनल मराठा कॉन्फ्लिक्ट्स पई कि सेटा ट्रिगर हेतला. ब्रिटिश माने सिग्निफिकेंट टेरिटोरीज गेन कर सारथिले. मराठा पावर वीक हे गला कंसीडरेबली. थर्ड एंग्लो मराठा वार जोटा कि 1817 रु नेकी वर्षे हेतला 1818 जाए. ब्रिटिश माने से माने मराठास को डिफीट कले. पेशवा बाजीराव सेकंड सरेंडर कले एंड मराठा पॉलिटिकल पावर इट केम टू एन एंड. मराठा एडमिनिस्ट्रेशन जदि हमें देखिबा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ने पुणे एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर थिला. पुणे रे पेशवा एक्सरसाइज सुप्रीम अथॉरिटी. रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम चीफ सोर्स ऑफ इनकम थिला. विलेज एडमिनिस्ट्रेशन रे जो पाटिल्स माने थिले हेडेड द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड कुलकर्नीज से माने विलेज रिकॉर्ड मेंटेन करूथिले. जस्टिस जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेस्ड लार्जली ऑन द ट्रेडिशनल कस्टम्स. पंचायत प्लेड इंपोर्टेंट रोल इन सेटलिंग द डिस्प्यूट्स. आर्मी मेनली कैवेलरी ऊपर डिपेंड करूथिला एंड मिलिटरी चीफ्स माने कंसीडरेबल ऑटोनॉमी से माने एंजॉय करूथिले. ओके सो थैंक यू. Thank you for watching. And with this chapter माने मराठास आपणकर कंप्लीट हेची. तो आज 8टा जाक चैप्टर हमें डिस्कस कले. तो मेडिवल इंडिया आपणकर कंप्लीट हे जाईची. पीडीएफ आपन को प्रोवाइड कर दिया जिबा आउथरे को रिवाइज कर देबे. एंड मु तो एडवाइस करथिली कि पेन एंड पेपर नै कि बसिबे जो पॉइंट ता नाही नोट्स रे ताको नोट डाउन कर नेबे. सो ओके थैंक यू फॉर वाचिंग and best of luck for your exam.